हेलो एंड वेलकम टू चेसिंग द टारगेट। आ गए हैं धोनी, आ गए हैं तेंदुलकर, आ गए हैं कोहली ऑफ दिस शो। फाइनली मुस्तफा भाई इज बैक फॉर अरे एवरीबॉडी हु वाज मिसिंग हिम। बहुत लोग आपको याद करे भाईजान, काफी लोग परेशान थे कि मुस्तफा भाई कहाँ हैं, उनके एनालिसिस कहाँ हैं। स्टैट गुरु के बाद अगर कोई गुरु है तो मुस्तफा भाई गुरु है। अरे कहाँ तो से सर। they were मैं all missing you. The Chirag Bhai, the Nitin Bhai, the Vinesh Bhai, the Gurpreet Paji, everyone was missing you a lot. And काफी ठंडे शो जा रहे थे। आपके जूते फिल करना बहुत लोग ट्राई करे, मैं भी ट्राई करा, लेकिन आपके जूते माशाल्लाह मेरे से बड़े। तो नहीं नहीं without further ado, he's back like Stone Cold's back. So Mustafa bhai, where were you? How are you? What's going on? Thank you so much, first of all, for the lovely introduction. I didn't deserve that, Magar. That was a very good introduction. Yeah, I was a bit on a family emergency, so I couldn't come for 5 days. I had to take care of the family stuff, but alhamdulillah, all is good now, and they're back in action, man. Too much to catch up on, and there's so much to look forward to. But yeah, as soon as I could, today was the first day I could come back, and I came back. I did my homework on the side, but not as much as you guys are doing a great job. Apai, Ran, Ashish did outstanding Vinay. job. Vinay did outstanding job. आगे तो आपके नंबर वन ट्विटर फ्रेंड, फैक्चुअल फ्रेंड नितिन पाजी इज बैक। ओ माय गॉड, मुस्तफा भाई आगे, हसन अली भी आगे। बस अब आमिर भाई आ जाएंगे पाकिस्तान में। उन्होंने बोला था नजम से शेट्टी सर उनको ले अरे आएंगे, तो या मे बी या नजम शेट्टी इज वन ऑफ द सीट, ही इज वन ऑफ द पर्सन जो पीसीबी के होने वाले चेयरमैन शायद। बट आमिर भाई के फिर बारे में से हम आ कल गए बात वापस करेंगे। नजीम भाई। या हाँ, इमरान अरे भाई को अरे बिठा लेके आ जा रहे हैं। इवन इमरान खान केम इनटू पावर, apparently he had left, and अब इमरान भाई आई थिंक जा रहे हैं, तो उन्होंने भी आ जाएंगे। खैर, good to see you, Nitin Paji. Good to see Mustafa bhai back. Good Lots to of see you, cricket, Nitin lots of bhai. cricket. Thank you everybody. Thank you everyone. Uh, हाँ, या आईपीएल आ रहा है। आईपीएल से पहले थोड़ा इंटरनेशनल के अगर तरफ हम देख रहे हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश टुमारो 7:30 yeah. आई थिंक माय टाइम। इंटरेस्टिंग मैच है। मीरपुर इज अनदर रैंक टर्नर काइंड ऑफ अ विकेट। फास्ट बॉलिंग के लिए बहुत ज्यादा एलन डोनाल्ड, ये सब कोचेस फोकस कर रहे थे। एलन डोनाल्ड वाज एक्चुअली स्पीकिंग इंटरव्यू में भी, अपन जो बात करेंगे थोड़ी देर में फ्रेश ऑफ द प्रेस में। बट या मुसाफा भाई, टुमारो इंडिया एंड बांग्लादेश, हाउ डू यू सी दिस गोइंग मैन? इसको भी रैंक टर्नर 3 दिन में खत्म होने वाला है मैच। तेजुल इस्लाम और अक्षर पटेल अगर आप पार्टी ऑन द पिच, मेरे को ऐसा लग रहा है लाइक अब आई डोंट नो क्या होने वाला है मैच में, मगर मेरे को ऐसे जो रिपोर्ट्स देखा, पिच रिपोर्ट भी देखा, स्पोर्ट्स यारी पे भी देखा, क्रिकेट इन्फो पे जो पढ़ा मैं, एंड जो भी दूसरे वेबसाइट्स थे, ट्विटर पे भी देख रहा था, काफी जर्नलिस्ट पोस्ट कर रहे थे, उसमें मुझे लग रहा है कि रैंक टर्नर है एंड 3 दिन में खत्म होगा विकेट। आई नो विक्रम राठौड़ वाज इट द या गेम विक्रम बैटिंग राठौर, कोच, रानछोड़ का ही राठौड़ नहीं, विक्रम राठौर। या yeah, उन्हें impressed नहीं था पिच के साथ. He said it. He was not impressed with the pitch, and that means it's gonna turn. It's gonna be exciting. Hopefully, I love rank turners, so like bring it on. मैं तो खुश हूँ. But from India's point of view, again, it's a very important test match. They have to win this, and then they can take a bit of a break in test matches, and then wait for Australia to come. But they'll have to win this match and take it from there. Basically, there's no choice. ये match जीतना है इंडिया को. From Bangladesh's point of view, they got dominated in the first test, so they'll be looking to come back. Some positives. Tajul Islam was a big positive. Mehdi Hassan, of course, he's a really good spinner. He can bat as well. But batting wise, I think Saqib, I heard that he's going to bowl tomorrow in this test या match. So if he's going to bowl, that will give them another option, left arm spin. And their batting needs to step up. Saqib needs to step up. Mushfiqur Rahim needs to step up. या The batting needs to really score runs and put India under pressure. Even if it's not like, if it's a ranked runner, I'm not saying you need to score 400, मगर 250 रन 300 रन ऐसा मार के थोड़ा इंडिया को प्रेशर में लेके आना, जैसा फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग करे थे नहीं लास्ट टेस्ट मैच में, वैसा थोड़ा अगर पहले से स्टार्ट करे तो फिर इंडिया को प्रेशर में ला सकते थे। तो मगर ये फैज अगर नोटिस करो 5 डे टेस्ट मैच, आपको थोड़ा दिखता है टीम्स में डिफरेंस। T20 में बहुत कम हो जाता है वो डिफरेंस, ऑन द डे, लाइक इट्स द फाइनेस्ट ऑफ मार्जिन्स, द बेस्ट ऑफ मार्जिन्स, लाइक Ian Smith used to say. But here it's more that you can see the squad depth, the actual level, like India's level is above Bangladesh, so it will be difficult for Bangladesh. But if it's a ranked runner, then it's anybody's ball game, and so let's see what Bangladesh do in that sense. Yeah, Bangladesh's board जो president है, he was saying कि Bangladesh have come a long way in all the formats, and I really agree with him कि Bangladesh ने जो hard work करी है in terms of T20 and ODIs, they've really turned their game around. Test maybe they've showed improvements. The interesting thing that you said for me was that opening batsman वो 3-4 जो first के रहते ना, that is where the game is actually there. Even in Pakistan we saw opening fire नहीं करी जब बीच में बेचारा एक बाबर और एक आई थिंक साउथ शकील के अलावा there was no one to hold the fort. When your openers, we saw in the fourth innings, like you said, Shanto and Hassan,
Zakir Hasan. Yeah, These guys gave us a he scare. was impressive. Huh? Zakir Hassan, very impressive debut. 124 for no loss, man. That was scary. And then Huh. he had some 300 odd runs left in the day, the next day also, to come. Hmm. So वो जरा risky था. Luckily, निकाल दिया अपन शंटो को, and then eventually Sakir also got out and stuff. And then वो fumble हो गया. मुशफिकुर रहीम, the शाकिब हुसैन हालांकि अच्छा खेला, aggressive खेला. मुशफिकुर रहीम के जिससे मेरे को समझ में नहीं आ रहा how he's batting. कभी aggressive intent भी दिखता, कभी फिर एकदम उन्होंने slow हो जाते, फिर उन्होंने कुछ बड़े बड़े down the ground आके शॉट मारे थे. तो मुशफिकुर रहीम really needs to step up for me. Litin Das has to step up in this test match that is to come, because there are a lot of expectations from him. तो but मीरपुर पे तेजुल का I think 8-4 39 भी लेके, तो he has a very good experience in this. तो या वही लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आई थिंक विल डोमिनेट टुमारो, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरा प्रेडिक्शन यही है. तो तेजुल एंड अक्सर विल डेफिनेटली बी बी इन द गेम फॉर श्योर. नितिन भाई सिंह दैट राहुल इंजर्ड है, हु विल ओपन. आई हर्ड उसको चोट लगी थी नेट्स वो में, बट फ्रेश आई ऑफ द डोंट प्रेस नो. में बोलने वाला था. खैर आई कैन रिवील दैट के अभी तक तो मतलब विक्रम राठौर जो वाज नॉट इम्प्रेस्ड विद द पिच, उन्होंने डाउन टर्नर्स डाउनवर्ड्स फेंकते जा रहे थे राहुल को के मार मार बेटे मार, ये पिच ऐसे खेलने वाली है. तो वो उसके सेशन में क्या हुआ, उनके हाथ पे लग गया, राहुल के हाथ पे लग अरे गया. हाँ, तो नथिंग सीरियस अबाउट दैट. इज व्हाट विक्रम राठौर सिंह ऑब्वियसली गलती करे बाद भाई कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, सब बोलने को रहता, लेकिन अभी आगे जाके मालूम होगा. अगर वो नहीं होंगे तो आई थिंक ईश्वरन ही होगा बेस्ट ऑप्शन. आई डोंट थिंक देयर विल बी एनीवन वही एल्स, बिकॉज़ ऑप्शन रोहित है. शर्मा भी इंजर्ड है. दैट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इन Yeah. I'm दैट a bit एस्पेक्ट. surprised कि प्रियंक पंचाल को नहीं लिया स्क्वाड में. मैं उसका देख रहा था, डोमेस्टिक नंबर्स आउटस्टैंडिंग नंबर्स है. सो आई वाज वेरी काइंड ऑफ सरप्राइज दैट उसको नहीं लेके गए टेस्ट स्क्वाड में. शुड हैव केप्ट हिम एज अनदर बैट्समैन बैटिंग ऑप्शन. लेकिन या आई थिंक ईसर वन ही डिजर्व्स हिज चांस. So if Rahul doesn't play, he will bat with Chuman Another Gill. main man who was missing you, Mustafa bhai, is in the house. अरे Tequila, and always what's he's showing up, us bro? support. Tequila was missing you throughout the last 4 or 5 days that you were not with us. But yes, Tequila bhai, thank you again. Always supporting us. Always, No, your no, coming thank you here is so more much. valuable for us as well. Yeah, I know it's good to be back and it's good to have you guys in the chat. बहुत मिस कर रहा था मैं आप लोगों को, but I'm back and let's talk cricket, guys. अरे भाई कोई नाराज है हमारे से. कौन है भाई नाराज? अरे टाइम फैस तुम्हारी गलती अरे नहीं अरे है. या क्या करो टेकिलिफ भाई, बस काम ऐसा है कि वर्ल्ड कप भी चल रहा है और फिर नहीं नहीं क्रिकेट का भी. डालेंगे आज से I'm डालेंगे. देखिए भाई आज से yes डालेंगे. I'm आपको sure. नाराज होना जायज है, हम दोनों की गलती है, हम कर देंगे. एंड मैं भी आई थिंक इसमें. मेरे को तो कैमरा पे भी आप लोग सूली पे चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं कैमरा पे बोल चुका हूँ कि मैं करूंगा ये चीजें, मैं नहीं कर पाया. Yeah. But yeah, I'm definitely going to work on that, and hopefully by today or soon, very soon. I can't even give you a commitment now because of the past. But yeah, inshallah, we'll definitely work on that. Coming to Mirpur, Mustafa bhai, I think there's not going to be a lot of changes in both the squads. I feel कि there's going to be साकिब वहीं आ जाएगा because injury I think उसकी heal up हो गई है. हाँ, एक update है. I think Taskin will come in for Ibadat is what people are saying. So Taskin Ahmed might come into the squad for Ibadat Hussain. Apart from that, it'll be the same thing. So looking at Taskin, the way he bowls and stuff on this pitch, Alan Donald was speaking earlier. Fresh off the press करना चाह रहा था, लेकिन जैसा कि अपन ये already बात करे, he was very keen on the Bangladeshi bowlers to sort of learn from the England bowlers against Pakistan. He said that these teamers took 26 wickets in the whole 3 days. 3 match के series में उन्होंने 26 wickets लिए. हालांकि spinning की paradise थी, but look how they were bowling. They were aggressive and they were bowling short. They knew how to scare it. So he's basically telling them to learn from this English bowler. What's your take? Exactly, they bowled too full I think in the first test match. अगर उनके लेंस अगर आप देखें सारे बैट के सामने थे, थोड़ा सा ड्रैग करना था जैसा सिराज कर रहा था. गुड लेंथ को भी टेस्ट करो, शॉर्ट बॉल भी टेस्ट करो, थोड़ा मिक्सअप करो. यू डोंट नीड टू मिक्स इट अप लाइक T20 क्रिकेट, लेकिन you have to hit other spots. If fine, you can try to swing it with the new ball. आप 5-6 ओवर डाल दो, उसमें भी आप एक आध शॉर्ट बॉल, एक आध सरप्राइज रखना चाहिए. गुड लेंथ को भी आप हिट करना चाहिए, स्पेशली अगर बॉल उतनी स्विंग नहीं हो रही जैसा हम देखे पहले टेस्ट मैच में. तो आई थिंक यहाँ पे भी दे शुड ऑफ कोर्स ट्राई टू स्विंग द बॉल. इफ इट डजंट वर्क, क्विकली गो एंड ट्राई डिफरेंट टाइप ऑफ लेंथ्स एंड बी अ बिट मोर थिंग. Yeah, Ibadat Hussain, he was very impressive for me in test cricket in New Zealand. He was very impressive in the one day series, but he will learn from that. He's a youngster. उन्हें सीखेगा. Taskin will bring that thing back, the experience back. He knows he's played more cricket, तो
उसको मालूम है पिच कैसा रीड करना, उसको उन्हें जल्दी समझ जाएंगे, आई होप उन्हें जल्दी समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे फुल नहीं, यहाँ पे गुड लेंथ डालो, या इट्स अबाउट trying to discover which length is good on the pitch. And I think Bangladesh took too much time in that test match, especially the faster bowlers, because they had India on the ropes. 40 for 4 थे, I think, right? Yeah, 40 for 3, 40 for 4, Yeah, 40 for 3 44 कुछ 3 थे. 3 yeah. हाँ, तो जब वो टाइम पे ऋषभ पंत को भी टेस्ट करना था, पुजारा को भी टेस्ट करना था, थोड़ा सा ड्रैग बैक द लेंथ. You don't have to bowl short, but they should have hit that good length a bit more, and they can take that. Alan Donald said it rightly, how the Indians bowled. They Yeah, can take that as a exactly. template. You have to be patient, but at the same time, it's good to test out different areas of the pitch. अगर आप, I know टेस्ट मैच में एक लाइन लेंथ आप डालो, it can be nagging, लेकिन अगर वो पिच में आपको नहीं दे रहा स्विंग, या वो लेंथ पे आपको वो जूस नहीं मिल रहा, तो फिर आप कहीं और जाके देखो, राइट? इट्स अबाउट, अगर आप कुछ खोद रहे हो, लुकिंग फॉर गोल्ड, अगर वहां पे आप खाली खोदते जा रहे कुछ नहीं मिल रहा, so then you have to go and check in another place, right? Exactly. Yeah. And Test cricket is such that you have the opportunity for that throughout 90 overs. I mean, if you're bowling first or whatever, तो आपको इतना टाइम रहता है कि भाई आप एक्सपेरिमेंट करो भाई, क्या से बहुत ज्यादा एक आध दो बाउंड्री मारेंगे, because batsmen also usually tend to play on the back foot. They don't really want to attack in a test match. So, I mean, in the initial overs अगर आप कर पाएंगे, आपको मालूम होगा कि ये स्पॉट पे ऐसा बॉल जा रहा है, ये स्पॉट पे ऐसा बॉल जा रहा है, तो I think that will help them out. But yeah, exactly जैसा एलन डॉनल बोला, आप भी सेम बोल रहे हैं, exact word to word बोल रहे हैं आप, तो माशाल्लाह, like I think आप एलन डॉनल ही है. But Alan Donald also was very praiseworthy of Zakir Hassan. He was saying कि भाई बच्चे का temperament बहुत ज्यादा अच्छा है. His self-belief and confidence is next to no one, and he's going to be crucial for us. And वही बोले कि भाई if we bat first, 350 to 380 will be a par score, which also I agree with that, because 350 380, the only thing is that 40 अगर 4-3 है, उसके बाद don't give away 400 runs. That is the only From thing. what अगर if the pitch is what I'm imagining the pitch to be, मतलब मेरा imagination है, this is not fact. If I'm imagining from what I read from the reports, 250 is a good score. That bad? You're saying it'll turn that much? You're saying? Yeah, I think if it's going to turn, it's going to rip. And 250, 260 will be a good score, I think. Good score. Yeah, I think so. That's ranked runners में ऐसे ही होता, like 250 का गेम रहता. तो yeah, 300 will be match winning. 300, 320. अगर देखे 400 was a match winning score, right? अरे चिराग भाई आ गए. चिराग भाई, thank you so much. Missed you, missed everybody in the chat. Missed Nitin भाई, Techie Live. विनेश भाई है नहीं? विनेश भाई किधर है? नहीं दिख रहे मेरे को. आएंगे विनेश भाई भी आएंगे. The devil is here. The devil is here, indeed. यहाँ पे सवाल है Rambo के बारे में. Thoughts on Ramiz Raja as a chairman of PCB? The only thing I would say about Ramiz Raja, look, that guy, like he actually has a very good cricketing brain. Not many people like him because उन्हें थोड़ा aggressive है बात करने के तरीके में. दुबई में भी like थोड़ा हमारे रोहित भाई स्पोर्ट्स यारी, उनके साथ भी थोड़ा बदतमीजी कर रहे थे एशिया कप के बाद रमीज राजा साहब, and दूसरे like साफियों के साथ भी करते हैं कभी-कभी. But if you look at it, he is a cricketing brain. He's been watching cricket for how many years, man? He's been commentating all over the world. He understands cricket and everything. मगर यही होता कि आपको जब पोजीशन में नहीं रहते, आप सब सही बोलते हैं. He was in his YouTube channel, he used to say everything. बाबर आजम डर के खेल रहा है. He said this 3 years ago, 2 years ago. तो आप ऐसा खेलेंगे तो नहीं जीतेंगे आप कुछ भी. मगर when he became chairman, I didn't see a change in approach. Like with Ravi Shastri, for example, when I know this is a different role, but when he was the coach of the Indian team, he walked the talk. Like it didn't work out. Like at the end, India didn't win anything under Ravi Shastri apart from massive 2 series in Australia. Those were major achievements, but in ICC tournaments, we didn't win anything, but he changed the way India approached Test cricket, the way India, fast bowlers को back करो. Of course, Virat Kohli का बहुत बड़ा हाथ था उसमें, but मार के खेलो जैसा. I don't know how much is true, but he told Rishabh Pant go for the total, right? I think Rishabh Pant decided that himself. लेकिन you could see that कि Ravi Shastri का छाप है कहीं. Now as PCB chairman, you have more control than a coach in terms of outside stuff. So मुझे वो नहीं लग रहा कि like in terms of tactics, team decisions. If Ramiz Raja knew that Babar Azam is a defensive captain, then why is he keeping him as captain, right? Why I know that he took you to a semi-final final, मगर you've seen what happened. Then pitches के बारे में पहले उन्होंने बोलते कि भाई हमारे पास pitches ऐसा नहीं बना सकते. अब pitches वैसा बनाए second, third test में फिर भी हार गए match. तो it's more about team selection. It's more about backing players. Giving domestic, not rewarding domestic achievements. And Ramiz Raja knows all this. उन्हें पहले खुद उसका जो YouTube channel है माशाल्लाह हमारे से बहुत बड़ा है वो
यूट्यूब चैनल, अब नहीं आते उन्हें उस पे, लेकिन ही यूज्ड टू से ऑल द करेक्ट थिंग्स, बट अब व्हेन अब तो जॉब चली गई, अब तो आएंगे। अब वही है, लाइक अब तुम्हारे को अगर बना दिया इंडिया का कोच, अब तुम जो बोल रहे हैं यहाँ पे, यू वोंट बी एबल टू इम्प्लीमेंट नो, एवरीथिंग, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ 100% फोर्सेस। इट इज, देयर आर लॉट ऑफ या डिफरेंस। क्या होता है जब आप बाहर से हैं, आप आप गाली दे सकते हैं, खुली बात। बट हाँ आप हाँ सिस्टम में, यू हैव टू बैक एवरीथिंग गुड और बैड। आप हाँ फेल है, आप पीसीबी है, आप आपकी कंपनी है, अगर आप अपनी कंपनी के बारे में बुराई करेंगे तो फिर आपको ऑब्वियसली इट विल मेक नो सेंस। एंड ही कांट गो अराउंड एंड सेइंग बाबर को नहीं आता, ही विल हैव टू बैक, ऑब्वियसली back end में he can do a lot of things that weren't necessarily probably going into his favor. Yeah, there was a not an agreement in that boardroom. Maybe वो भी हो सकता है कि a lot of people not understanding his यार, एंड उन्होंने कुछ बोला था नहीं कि जर्नलिस्ट को रीजनलिज्म में मत जाओ ये वो, मगर अगर आप सरफराज Mhm. अहमद को बिठाएंगे 3 टेस्ट मैच में, जहाँ पे आई थिंक कितने मेंबर स्क्वाड था, 16 या 15, उसमें से खाली एक बंदा नहीं खेला टेस्ट मैच, उसमें सरफराज है। तो अगर आप नहीं करेंगे वो, तो फिर लोग बोलेंगे रीजनलिज्म है बोल के, और क्या बोलेंगे बोलो, कराची का Yeah, है नहीं खिलाया उसको, वही तो बोलेंगे। अगर आप उसको दिए मौका थर्ड टेस्ट में एटलीस्ट अगर दे दिए तो फिर नहीं yeah. बोलते थे। तो आप और जो और लाइक कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, तो उसका आपको फिर भुगतना पड़ता है, राइट? जो भी और आप डिसीजंस ले रहे हैं, यू हैव टू एंड स्टैंड अप सबसे फॉर बड़ी दैट। चीज क्या है यार, यू हैव अ विकेट कीपर एक्सपीरियंस एंड रिजवान इज नॉट परफॉर्मिंग सिंस गॉड नोज व्हेन। तो रिजवान को कई को इतना भाई इन बैक टेस्ट कर रहे मैचेस हैं। इन पर्टिकुलर, यस आई या एग्री, इन इन टेस्ट टेस्ट मैचेस, मैच या में ही नॉट, आई थिंक लास्ट टूने 2022 मार्च में कुछ खेला था, दैट इज इट। उसके बाद आई हैव नॉट सीन एनीथिंग, इवन इन द टी20 इज नॉट परफॉर्मिंग ब्रो। एंड टी20 जैसे बॉल खा रहा है, बॉल खा रहा है, यहाँ जहाँ बॉल खाना है वहाँ बॉल खा रहा ही नहीं, वहाँ स्वीप मार रहा है, आउट हो जा रहा है। सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर रिजवान्स पोजीशन राइट नाउ, एंड दैट इज व्हाट गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग इन द न्यूजीलैंड का जो सीरीज आने वाला है, कि व्हाट दे गोइंग टू डिसाइड, आर दे गोइंग टू गो विद रिजवान और दे गोइंग टू एक्चुअली फाइनली गिव सरफराज थिंग या the thing is, position. look, with comment, I'll explain, right? This thing is confused as a particular. I'll explain. Thing is, there was a period, lockdown period में 2009 20 से लेके Mhm. 21 तक ले लो, रिजवान वाज हिटिंग इन एवरी सिंगल फॉर्मेट। उसके उन्हें पीएसएल में भी जिता दिया था मुल्तान को, वहां जिता पे भी दिया, बल्ले या था, पाकिस्तान के लिए भी मार रहा था। अप टिल दैट टी20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर, उसमें भी उन्हें मार रहा था। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि स्ट्राइक रेट वाइक रेट सब बोल सकते हैं, मगर सेमीफाइनल पहुंचे, राइट? अभी भी बाबर और रिजवान के थोड़े पार्टनरशिप्स थे, वट एवर इट इज, देयर स्कोरिंग रन्स। तो आपका करेंसी क्या रहता है टू स्टे इन द टीम? रन्स। वेदर दोस रन्स runs. make you win or lose, that's a separate thing, which shouldn't be a separate thing, but it is. तो जब उन्हें रन्स बना रहे उसको नहीं बैठाएंगे। अब उन्हें एकदम से फॉर्म नहीं पकड़ रहा, उसका उन्हें नहीं मार रहा, पर टेस्ट मैचेस में मैं देख रहा हूँ थोड़ा टाइम हो गया, एंड ऑल्सो उसका थोड़ा टेक्निक डॉजी है। वो उन्हें पिछले मैच में ओपन भी करके आया, यहाँ पे लाइक इवन इफ इज बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर, ही इज लूज आउटसाइड दैट ऑफ स्टंप। अगर बॉल उतना स्विंग भी नहीं हो रहा, he has a problem if it's coming in, he has a problem, he has a problem with the reverse swing, with the in swinging delivery. So I think there are issues now, technical flaws that I didn't see before as Rizwan the batsman, but he has been consistent, इसलिए उसको लंबा रन दिए, वो रन्स बनाया, उन्हें आईसीसी का नंबर 2 प्लेयर था, शॉर्टर फॉर्मेट में। सो आई गिव दैट टू हिम, he's a very good batsman, बट यू ऑल्सो हैव टू एनालाइज कि भाई ये रन्स जिता रहे नहीं जिता रहे, और जब नहीं रन्स मार रहे, फिर आपके पास जब है ऑलरेडी मंझावा खिलाड़ी, आपके पास सरफराज है, एटलीस्ट दोनों को खिला के देखो, पहले दोनों को खिला के फिर देखो कौन परफॉर्म करे, उस हिसाब से करो। हमारे अगर साथ अपन इब्राहिम, कमेंट्स में, या अपने कमेंट्स में अगर अपन देख रहे तो they're saying, चिराग भाई also saying, and now Ibrahim also saying Rizwan is selected as the vice captain. I don't think he will sit out if Sarfaraz plays, it's in Azhar Ali's that's place. also fine. I don't mind that. I have no issues. You don't need to replace Rizwan right now, because, like I said, he's had a good run in the Pakistan team. He's done a lot for him to, cement his place. The currency is runs. He's got runs. थोड़ा सा आपको देना पड़ता, नहीं तो फिर हम बोलते कि कैसा छोड़ दिया उसको, कैसा ड्रॉप कर दिया। आप रखो उसको टीम में, 11 में भी खिलाओ, मगर आप सरफराज को भी चांस दो, राइट? जब आप 3 टेस्ट मैचेस में सबको खिला रहे हैं और एक बंदे को नहीं खिला रहे, तो व्हाट डज दैट मीन? लाइक यू शुड, एंड स्पेशली व्हेन योर टीम इज नॉट डूइंग गुड, अगर आप अच्छा खेल रहे, नक्को खिलाओ, किसी को भी मत खिलाओ, 11 ही खिलाओ आप, कोई बात नहीं। एक टाइम था, आई थिंक गंगुली के अंडर या धोनी के अंडर वही 11 खेलते थे इंडिया के, बिकॉज जीत रहे थे तो Yeah. खिलाओ, खिला के कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब नहीं चल रही टीम, आप सीरीज हार गए, तो फिर आपको बनता है, राइट? सरफराज को चांस दो। आप उसको ड्रॉप भी कर सकते थे ऑन एक्सक्यूज ऑफ रेस्ट। आप उसको बोल सकते थे कि रिजवान को थोड़ा रेस्ट कर दो, ही इज बीन इंजर्ड आल्सो इन एंड आउट, लेट हिम रेस्ट अ बिट, गिव सरफराज अ चांस। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग ड्रॉप हिम। मैं तो वैसा नहीं बोल रहा हूं, मे बी यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। अच्छा, प्ले रिजवान नो प्रॉब्लम, लेकिन सरफराज को See, तो चांस for देना me, था। मैं बोलता हूँ, देखो, एक मेरा जो पर्सपेक्टिव है, रिजवान का लास्ट सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में आया, यस, 104, ठीक है। उसके बाद कितने खेल लिए पाकिस्तान, काफी हद तक दे प्लेड टेस्ट क्रिकेट। नाउ रिजवान की एबिलिटी क्या है? विकेट कीपिंग। सरफराज की एबिलिटी क्या है? विकेट कीपिंग।
he's not even going to help you in the field. So that is my only thing, that when runs is the currency, yeah, runs is the mudda of getting into a team for a batsman wicket keeper, then he's not performing, then you have to sit him. अब आप उसको vice captain बना दिए क्या basis पे? What is the basis of your vice captaincy? वही Please runs explain. bro, like runs But नहीं है वही performance तो चलो नहीं, अब performance नहीं अच्छी है, थी अब but नहीं है। नहीं, मैं अभी जब given the बनाए current थे, जब मेरा बनाए point थे, क्या है, जब हाँ हाँ नहीं समझ गया, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ मैं, बट मेरा पॉइंट ये है कि भाई जब कैप्टन बनने का एक वो अपॉर्चुनिटी है, ये स्टेज पे लाके कैसे बनाते हैं वाइस कैप्टन किसी को, जहाँ पे उन्हें बिल्कुल ही छील मेस्ड अप इन एवरी डिपार्टमेंट, T20 वर्ल्ड कप नहीं चला, टेस्ट क्रिकेट नहीं चल रहा, तो फिर आप कैसे बनाते हो उसको बेसिस पे T20 वाइस कैप्टन कैसे बना? चलो ये बोल रहे होंगे कि भाई जैसे अपने कहने बोलते हैं भाई बच्चा वेला बैठा हुआ है, शादी करा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, मैं भी बड़ा हो अब जाएगा, वो मेरे वैसा हिसाब सिचुएशन से दिख रहा। मेरे हिसाब से उन्हें बाबर के साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप, दूसरी चीज उन्हें उन्हें मुल्तान के लिए T20 PSL जीता, PSL राइट, he's won the PSL with Multan as captain, and they were looking at him, I think, as someone, अगर बाबर नहीं है इन्हें चला सकता है टीम को, because he's also more experienced, he's a year older to Babar, I think he's 30, so he's a couple of years older to Babar, he has that experience, so it gives a calming influence, they both open the batting as well, they have a relationship, they have a bond, Babar can feed off him. अब कैप्टन, फॉर मी द कैप्टन शुड चूज द वाइस कैप्टन, आई नो थोड़ा सा वो रहता, बट मेरे हिसाब से अगर मुझे कप्तान बना दिए, आई वांट समबडी हु आई कैन कम्युनिकेट विद, बिकॉज़ आई नीड टू टॉक टू माय वाइस कैप्टन, विकेट कीपर एंड वाइस कैप्टन बोथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू योर कैप्टन इन माय ओपिनियन, ऑफ कोर्स द बॉलर will set the field and everything like that, but जब आप पूरा फील्ड देख रहे, the best view is the wicket keeper, and vice captain should be an experienced player, and you need to have that communication, you need to have the direct line कि भाई कुछ है, अब मैं जाके आपको पूछ सकता हूँ, अब हम लोग दोनों काम कर रहे हैं, राइट, मैं वाइस कैप्टन हूँ, आप कैप्टन है, आप मेरे को मैं पूछ रहा हूँ आपको फैज ऐसा करना है क्या, काम में भी लोग पूछते हैं, तो वैसा रहता, तो अभी बाबर is comfortable with him, that's why he picked him vice captain, that is also fine. I understand he's not scoring runs right now, that also I'll give, but I'm saying at least get the other guy in the team and then see if he's scoring runs, then you drop this man and you continue. Same reason why KL Rahul was given vice captain. Yeah, देखो KL Rahul का भी runs नहीं है, currency नहीं है runs का. He actually, KL Rahul has been longer spell. If Rizwan, if you see last World Cup तो उन्हें लेके गया सेमीफाइनल, उन्हें वो सेमीफाइनल एशिया कप में भी बहुत स्लो था उन्हें, लेकिन फाइनल में उन्हें ही मारा था 60-70, तो रन्स आ रहे हैं उसके। रिजवान मुल्तान में कैप्टन था, हाँ, मुल्तान सुल्तान्स उन लोग जीते थे 2020 में या 21 में, हाँ 21 में जीते शायद, लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर जीते थे, 20 में कराची जीती थी, 21 में मुल्तान जीती थी, उन्हें कैप्टन था, फिर आई थिंक ये साल भी प्लेऑफ से कुछ आए थे, ही हैज अ गुड रिकॉर्ड एज कैप्टन, और उसके रन्स आ रहे, मैं यही बोल रहा हूँ, एशिया कप में भी हारे थे, उन्हें स्ट्राइक रेट में उन्हें दबा दिया था जो भी है, लेकिन उन्हें अकेले खड़ा था, अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो ही इज गेटिंग द रन्स, उसको बैक कर रहे हैं, अब ठीक है ये सीरीज बहुत बुरा गया, नाउ दे हैव टू टेक द कॉल, आई एम सीइंग दैट थर्ड टेस्ट मैच they should have given him a rest, got Sarfaraz in and given the chance, and then in the next series if you want you can play both, or you play one and you drop the other, but at least give the other man a chance. आपको वो बंदा जैसा मुसाद भाई हमारे पास आए थे हमारे चैनल पे, वो बंदा took a very weak team and make them T20 champions, T20 number 1 ranking and Champions Trophy champion, सरफराज जो करा था, उसके पास इतना नहीं था resources, उन्हें किस को मतलब खिला रहा था, हफीज भी खेल रहा था उसके अंडर, उन्हें फखर जमान आके खेल रहा था, कौन आके चिपिंग कर रहे थे, या मोहम्मद आमिर बैक आफ्टर बीइंग बैंड आफ्टर 5 years, उसको आके उन्हें लाइक जबरदस्त बॉलिंग करवाया, सो जुनैद खान, इमाद वसीम को जो यूज करता था उन्हें, वेरी स्मार्ट क्रिकेटर, सो इवन इफ ही इज ऑन द फील्ड एंड मे बी ही इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग विद द बैट, ही कैन हेल्प बाबर इन दैट, बट आई थिंक बाबर की ज्यादा जमती है रिजवान के साथ, और रिजवान के रन्स है, ही इज परफॉर्मिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लाइक राइट नाउ रिजवान इज स्कोरिंग मोर देन सरफराज डिड इवन इन डोमेस्टिक, राइट, लेकिन नाउ सरफराज हैज स्कोर्ड डोमेस्टिक रन्स, ही इज गॉट रन्स अंडर हिज बेल्ट एंड रिजवान इज नॉट परफॉर्मिंग, देन यू नीड टू गेट हिम बैक एंड ट्राई इट आउट, प्ले बोथ ऑफ देम, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, देन वी विल सी हु इज बेटर, एटलीस्ट वो खुला मुकाबला हो जाता, राइट। करेक्ट, सही है। वो टेकी लिफ्ट का लास्ट लेके विल मूव इनटू द अदर थिंग्स। पाकिस्तान में ब्रेक लेने का कल्चर नहीं है। इन माय चाइल्डहुड आई हैव सीन इमरान फॉर द रिक्वेस्ट फॉर अ ब्रेक एट दैट टाइम। तौफीक उमर played well in his absence, and then इमरान फॉर तौफीक उमर याद है कौन है? तौफीक उमर याद है कौन? मुंह में गुटखा लेके आते थे सब लेफ्ट हैंड। बट नहीं, आई थिंक दैट इज आल्सो वन रीजन दैट people don't
take a break, take live in the subcontinent at least, because डर है ना, कुर्सी कहीं से भी चले आ सकती है आपकी। अब सिचुएशन ऐसा है कि इंजरी वही भी है, रही, इसलिए नहीं छोड़ा हमने। रिजवान नहीं नहीं खेला थर्ड, छोड़ा। उसको हाँ, उन्हें इसलिए खेला, उसको मालूम है सरफराज अगर आके यहाँ पर ठोक दिया सेंचुरी तो मेरी तो पोजीशन खत्म, जाती टाटा, बोल के। बाय बाय। सो बट मगर या आई फिर मीन, आपको मैनेजमेंट को कॉल लेना पड़ता है फैज। सीधा बात है कि जो हमारे जो कुदरत के निजाम भाई सफीन मुश्ताक नीड्स टू टेक द कॉल एंड से कि भाई आप बैठ जाओ, आप रेस्ट कर लो, देख लेंगे नेक्स्ट, मैं सिक्योरिटी देता हूँ आपको, आप रहेंगे नेक्स्ट मैच में, लेकिन अभी एक मैच आप रेस्ट कर लो। वो फिर कोच का कॉल रहता है, राइट, कोच और कैप्टन, मगर कप्तान साहब शायद नहीं छोड़ना चाह रहे रिजवान को। एंड I've heard a lot on different YouTube channels, on different articles and stuff कि वो है थोड़ा रीजनलिज्म है पाकिस्तान में, like whether you like it or not। एक टाइम पे इंडिया में भी था, like बॉम्बे का डोमिनेंट होता था, like in the Indian team, the Maharashtra culture, and then then Punjab as well, I think North India at one time। so it happens in our cultures, थोड़ा सा रहता कि जो मेजोरिटी है उन लोग अपने को लेके आते whatever, but yeah, right now Pathan and Punjabis are dominating the Pakistan team। I'm sure it's a bit of that, but also if you look at it, Rizwan's getting runs, like now he's not, but he's got, yeah, maybe, he's yeah, but achieved quite also a one, bit to get to it, yeah। one thing we were discussing yesterday was that, अरे यार वो कौन बनेगा कैप्टन? So maybe if I'm looking at a positive angle for Pakistan, yes, young बंदा है, 30 years का, he can give 4 to 5 more years। So it's good that Rizwan is probably, अगर बाबर नहीं चला तो Rizwan will be there, maybe in that aspect they're trying to get a new leader also, तो वो भी हो सकता है। So a lot of things that go into this kind of thing, man। PCB के चेयरमैन का and मैनेजमेंट का, फिर इसका सिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सिंक जरा बिल्कुल। टूटा हुआ दिख रहा। बट कुदरत के निजाम की बात करें तो कुदरत का निजाम इंटरव्यू भी दिए थे रिसेंटली, उन्होंने बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। इंग्लैंड में हालांकि 3-0 व्हाइट वॉश हुआ है, वी कुड हैव वन सर्टेन गेम्स, पैचेस में अच्छा खेले पाकिस्तान, बट दे वर नॉट एबल टू होल्ड द फोर्ट। Yeah, the thing is that in the last World Cup, I was very impressed with the way Pakistan played, but this World Cup, I was not that impressed। ठीक है, उन लोग न्यूजीलैंड को मारे, साउथ अफ्रीका को मारे, मगर the way they were losing games, इंडिया के अगेंस्ट एकदम से मैच फेंक दिए, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच फेंक दिए, that you will get punished at some time, and yeah, they needed a bit of luck and they get bad luck sometimes, but I felt that it should have been a better performance with the team that they had। इतना टाइम डिस्कोर्स ये था मिडिल ऑर्डर नहीं है, मिडिल ऑर्डर है भाई, आपके पास बैटिंग है मिडिल ऑर्डर में, आप यूज नहीं करते हैं, आप उनको मौका नहीं मिलता, तो फिर ऐसा दिखता कि मिडिल ऑर्डर नहीं है, लेकिन है मिडिल ऑर्डर। सो इंडिया के पास भी एक प्रॉब्लम था 2019 में, Ambati Rayudu is a very good middle order player, but the thing is at that time the top three was scoring so many runs कि they didn't get a chance। That's नंबर 4 का प्रॉब्लम हो रहा था। अभी आप देखो सूर्य कुमार फट से आ जाता, बिकॉज राहुल रोहित शर्मा जल्दी आउट हो रहे, उन्हें फट से आके मारना शुरू कर देता। अगर उसको चांस नहीं मिलता फिर उसका भी फॉर्म डिप होएगा। इफ यू डोंट गेट दैट मच एक्सपोजर, देन थोड़ा बहुत तो होता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट buckets of runs the openers hit, both Babar and Rizwan, and Dhawan, Rohit and Kohli, they used to score buckets। so the middle order पे वैसे impact होता। इब्राहिम भाई बोल रहे हैं कि आई थिंक द प्रॉब्लम विद सरफराज इज ही इज एट द एंड ऑफ हिज करियर एंड इज नॉट लॉन्ग टर्म solution for the wicketkeeper position। They should select Rohit Nazir if they want to। Okay, that's also fair enough, lekin at the same time they should have given Sarfaraz a longer run, right? Like you dropped him from captaincy, I understand, but they should have given him a longer run as a keeper, as as a batsman, even as a captain. Honestly, he won you the champions trophy. He should have gone a bit of a longer run again। Fine, I'm not saying to make him captain right now, but he has that experience, he can help you in these situations। That's what I'm saying। When you have somebody at that age, अब जैसे Pujara is also at the end of his career, लेकिन they stuck with him for this tour, right? उसको बीच में ड्रॉप मार रहे थे, उसको रहाने को तो ड्रॉप मार दिए, मगर पुजारा को वापस क्यों लाए? Because he scored runs in the domestic, he went and played county cricket, he improved his game, he came back। Now आपको ने 90 और 100 मारा, and this test match you can say Bangladesh जो भी, but it's a very important test match and he performed in that। So that's what I'm saying, in those situations you don't need to make him captain। अब पुजारा को vice captain बनाए, they didn't have to do that, but the fact that they got him to play, you have that option, right? Ki experienced player hai, this Sarfaraz I feel can impact in kind of series like that, especially at home। I think he can impact it, lekin let's see what happens। Yeah, Rohit Nazir is also a good option, younger option, he's also done well, so let's see। The press conference of Babar Azam Shakleen Mushkan was very much fun, loving to hear his logic। Shakleen said, if you see overall, we were able to win each and every session। Babar says we are dominating। I mean, देखिए भाई वैसा है तो फिर वर्ल्ड कप जीत गए उन लोग वैसे, because they've also dominated in the World Cup। इन्हें सकलेन भी मेरे को समझ में आता, सकलेन भाई जो है कभी
क्या है कभी उन्होंने रात, कभी बेसिकली सुबह, कभी शाम, कभी दोपहर, कभी पॉजिटिव खाना, कभी फेंक रहे हैं पानी, कभी भाई। रोना, कभी धोना, ऐसा थोड़ी चलता है यार क्रिकेट। थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल रखना पड़ता है। आई अंडरस्टैंड कि कीप इट लाइट, बी पॉजिटिव, व्हाटएवर, बट समटाइम्स यू हैव टू कम एंड स्पीक द ट्रूथ कि भाई नहीं खेले बराबर। अब जैसा T20 वर्ल्ड कप हारे इंडिया सेमीफाइनल में, रोहित शर्मा खुद बोला, ही सेड ओपनली कि आई डोंट नो व्हाई वी आर गेटिंग इंजर्ड, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, इवन दो ही इज आल्सो गेटिंग इंजर्ड, बट दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। ही एड्रेस्ड द इशू, ही डिडंट से कि अरे ऊपर वाले का वो है, लाइक ठीक है, यू हैव टू एड्रेस इट, यू हैव टू से कि आप क्रिकेट, अगर कोई पूछ रहा है आपको सवाल, क्रिकेटिंग आंसर दो। कभी सुबह, कभी रात, कभी शाम, ऐसा आप देंगे तो फिर जर्नलिस्ट भी लाइक सब हंसेंगे। ठीक है, एफर्ट। इट्स फन, बट एज अ कोच यू नीड टू बी अ बिट, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कि दो आंसर्स, थोड़े जवाब दो यार, या नो सही है। थोड़ा आई सा। मीन देखो, अगर आप रवि कोच शास्त्री है, ने बोला, फैज रवि शास्त्री ने बोला ऋषभ पंत needs to take more responsibility when he was coach. There was a period when Pant wasn't performing before that Gabba stuff. He was dropped from the test squad. Saha was the keeper. Ravi Shastri aake bola that he has to be. He's playing some irresponsible shots. He needs to take responsibility. He said this with Virat Kohli in an interview. Virat Kohli didn't say anything, but it was Ravi Shastri who was talking, and he said it. So, as a coach, you have to address your problems also in front of the media. yeah, and that will add pressure to the player to even perform better. I think that is also important, that the person should also know at a larger audience कि भाई ये मसला है, खुला दिख क्या रहा दुनिया के सामने, जरा आप देख लो जो भी है। बट अगर अपन अब इंटरनेशनल से रिवर्स मार के थोड़ा डोमेस्टिक में गया, आज बीबीएल का मैच देखे भाई, भाई मिस्टर नेसा ब्रो, ब्रिस्बेन हीट वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स। डॉक्टर ड्रे। नेस्टर तो था, डॉक्टर ड्रे, एंड डॉक्टर ड्रे इज आल्सो इन द आईपीएल ऑक्शन ब्रो। क्या 57 मारा, और Wait, एक he's not छक्का in a team? he's not in the team I think right now. He's free, he's open. अभी लिख के ले लो, Andre Russell to Mumbai Indians, लिख के ले लो, if he's If I'm available. I not don't think wrong. he's available, bro. I don't think he's available. But फैज, तुम बीबीएल का अपडेट दो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, अभी 2 मिनट दो, हाँ, मैं इधर ही हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। बीबीएल का बीबीएल का अपडेट अपडेट ये दो है कि भाई यार इंसेन मैच था आज। ब्रिस्बेन हीट वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड था। वी हैड द लाइक्स ऑफ आंड्रे रसल, एक छक्का मारा ग्राउंड के बाहर, इनसेन शॉट था। अगर आप लोग नहीं देखे, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गाइस go and see. Akil Hussain, 3 wickets, 26 runs. He managed to hit 30 runs आके उन्हें गेम संभाला with Aaron Finch. Aaron Finch बहुत स्लो पारी खेला, 31 runs of 43 balls कुछ मारा था, but he was the finisher. मतलब he played an anchoring role in that because Nesser has taken an हैट्रिक लिया था नेसर ने। 4 wickets, 32 runs. माइकल नेसर इज कंप्लीटली डोमिनेटिंग द बॉलिंग। आके सीधा एक हैट्रिक लेके उन्हें प्रेशर में डाल दिया था, बट एरन फिंच रुक रुक के खेला। फिर आके आंड्रे रसल 57 मारा मेलबर्न के लिए, एंड अकील हुसैन एंड एरन फिंच टुगेदर पुट ऑन अ वेरी गुड पार्टनरशिप। फिर सदरलैंड आके उन लोगों का जो टेलेंडर है, आई थिंक देयर वाज लाइक कितने 6 of 3 कुछ था, he came and smashed, or 8 of 3 कुछ था, and he came and smashed the 6 out of the ground. Insane. Sutherland had hit a 6, and then Aaron Finch 4 मारा। तो Melbourne Renegades is still second because Adelaide Strikers की जो net run rate है, नेट रन रेट के वजह से एडलेड स्ट्राइकर्स अप because 15 रन्स ऑल आउट जो करा था, आप याद रखो कि टू मच था। Yeah, I think Andre Russell is retained by the Kolkata Knight Riders. I just checked that as well. मेरे को वही था, कल शो देखा, मेरे को कई को लगा रिलीज था, बट या ही इज रिटेन्ड बाय द नाइट राइडर्स। तुम्हारी आवाज म्यूट पे आप। नहीं, मैं वही सोच रहा था कि रसल को कैसा छोड़ नहीं छोड़ता है यार, रसल को देयर इज नो वे ब्रो। हाँ, मैं कई को यूसुफ कैसा लगा या हाँ भाई ये देखो, यूसुफ अनस लाइक प्रो मैक्स, ही सेड इन न्यूजीलैंड दैट जहां पे हमारे बैटर शॉट्स खेल रहे थे वहां फील्डर थे, सो फील्ड के हिसाब से करना पड़ता भाई। चैट मिस तो मतलब वो तो नहीं, दैट सेम थिंग, द दैट्स द सेम थिंग नो भाई। शॉट फील्ड के हिसाब से आप सेट करते हैं, ऑब्वियसली बैट्समैन के हिसाब से फील्ड सेट करते हैं। इंग्लैंड भी वही करी भाई। इंग्लैंड का भी अगर आप देखो, दे हैड व्हेन दे हैड मार्क वुड एंड दे हैड द फास्ट बॉलर्स कमिंग इन, द फील्ड प्लेसमेंट वाज ब्रिलियंट। उन्होंने करीब रखे सबको के शॉर्ट लेग भी था, आपके स्लिप्स भी थे। तो आई मीन इट्स सच अ वियर्ड एक्सक्यूज। फील्ड देख के करना पड़ता है हाँ, शॉट नितिन पाजी सदरलैंड आते की जो 6 मारा भाई, वो गेम चेंज हो गया था। 9 of 6 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या तो 9 of 6। भाई क्या छक्का मारा। फिंच भी परेशान हो गया, सब परेशान हो गए, उन्हें आते की टेलेंडर कैसा रख दिया। लेकिन या बट डी रस का अगर आप लोग इनिंग्स मिस करे बीबीएल का, आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू गो वॉच इट बिकॉज़ ही स्मैक्स अ 6 आउट ऑफ द ग्राउंड। वेरी वेरी बिग। इतना स्लो खेलना भाई, इतना स्लो खेल रहा था। 135 स्ट्राइक रेट है उसका। फिंच का बोले
मैं रसल का रसल का बॉल खाना पड़ा विकल भाई, हैट्रिक लिया तुम्हारा बॉय नेसर, नेसर आके हैट्रिक लिया, उसके बाद 4 विकेट भाग गए, वेरी गुड 4 इनिंग्स for ब्रो, वेरी 60. गुड इनिंग्स। Ben Finch रसल की played बहुत an, अच्छी। look at Finch's strike rate bro, it's like 60 something, ये 40 क्या 43 ब्रो बॉल या कोई मैं 31 एरन मारा। फिंच का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ अब मैं आ रहा मिल थोड़ा चुका हूँ लेकिन भी उससे। हाँ ये मिल है। चुका हूँ भी उससे, और उन्हें एक बार याद है आईपीएल में ड्रेसिंग रूम में बैठ के वेप मार रहा था। फिंच ही मैन, ब्रो दैट वाज अ स्लो स्ट्राइक रेट द 72 भाई। लेकिन हाँ एंड्रे रसल 6 छक्के भी मारा, सो ही मेड अप फॉर दैट स्ट्राइक, इट वाज अ ग्रेट इनिंग्स। And bro, just in time. I mean, he's not in the auction. Like he's already in KKR, but I think KKR fans will be happy with that. And it goes to show, bro, West Indies में दम है players में, and they're always the best options. उन लोग मैच विनर्स रहते हैं, ठीक है कंसिस्टेंसी नहीं रहती, बट इन लोग ऐसा खेलते मैच पूरा घुमा देते। मेरे को याद है फर्स्ट याद है 2019 में कोविड से 1 साल पहले जो सीजन था, क्या रिडिकुलस इनिंग्स थे रसल के, अनबिलीवेबल, मतलब 70 ऑफ 20 बट मैं भैया पहली फिर बार एकदम देखा। ऐसा हो गया रोने, वो समझ में ना नजर लग गई उसको क्या, भाई मगर उसके बाद जब वैसा खेलते फिर वैसे ही होता, यू कैन नॉट हिट एवरी सिंगल गेम, यू कैन नॉट but हिट that इट guy was कंसिस्टेंट hitting लॉन्ग every पीरियड। single game bro, that guy was hitting वही मगर every उतना single पूरा game. सस्टेन करना 10 साल के लिए बहुत मुश्किल है, Obviously, लाइक यू नो दे विल, यू हैव obviously. पीरियड्स, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम वेयर आई सॉ 80 ऑफ 30 गेटिंग चेस्ड, आई नेवर सीन दैट इन माय लाइफ, सो दैट मीन दैट वाज रेवोल्यूशनरी, लाइक यू नो हाउ वी आर सीइंग टेस्ट क्रिकेट में बेसबॉल, व्हिच इज रेवोल्यूशनरी। आई थिंक रसल द वे ही चेंज्ड T20 क्रिकेट विद दोस सिक्सेस, यू कैन से ब्रैथवेट टू सर्टेन एक्सटेंट, मगर रसल जो चेस कर रहा था, यू नो 30 में 80 पे, उसके बाद ये सब टिवाटिया लोग सब मारना शुरू करे, जब इम्पॉसिबल होता था, यू नो एट दैट टाइम ऐसा 80 ऑफ 30, 70 ऑफ 25 28, ये इम्पॉसिबल, उन्हें रसल आके पूरा चेंज करा। सो या अगेन टुडे वेरी वेरी रिस्पांसिबल इनिंग्स, एंड देन ही हैज द पावर, मैन, he can clear any ground, you saw that again today, Yeah, massive man, runs he in has Australia, massive the talent. power is just brutal, man, brutal power from Andre Russell। 100%, and Finch has also be coming back to form, दो बैक टू बैक उन्हें फिनिश कराया मेलबर्न रेनेगेट्स के लिए, पिछले पहले के मैच में उन्हें 70 और मार के स्टेट टिल द एंड टुडे, बट टुडे आई थिंक फॉर मी द मेन गाय वाज अकील हुसैन, 3 विकेट्स लिया 26 रन्स के लिए, एंड उसके बाद उन्हें 30 रन्स आके स्टैंड करा विद फिंच। आई नो ही वाज अनएबल टू फिनिश इट, बट ही इज इन द ऑक्शन, ही इज नॉट बॉट yet. Yeah, that is one Pick him, person bro. I'm Pick very him. sure. He's a very good Pick player. him. Even in the World Cup, he was good in the last World Cup. Also, he was decent. I mean, this World Cup he wasn't that great, but he's a good player. I've seen him in T20s, in international stage as well. He's done well, Akil Hussain, and he can provide with the bat. 100%. सिर्फ ये देखो रसल काइंड ऑफ प्लेयर्स लीग के बने, दे जस्ट मेंटेन देयर फिटनेस फॉर लीग कंपटीशन ओनली। आल्सो टेक्निकली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज प्रॉब्लम्स इन द वेस्ट इंडीज बोर्ड, अगर उस उन्हें इंडियन प्लेयर है तो उन्हें पूरा हर मैच खेलता है T20 का इंडिया के लिए, लाइक वैसा प्लेयर है उन्हें, लाइक मैच विनर है इंटरनेशनल स्टेज पे। 2016 में he had a big role to play in that T20 World Cup, Andre Russell। I think इंडिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में मारा था नहीं फर्स्ट एंड में, Yeah. Dhanadan. So he is an excellent player. He can play, but the thing is, they become league players because they have problems with the board. The board can't afford their wages. They don't pay them enough. Whatever. That's why they play league. But if he gets paid, and if he and there's no politics, then he'll play. Like there's a lot of politics in the West Indies cricket. You know, at a certain time, I used to say, "Look, paise ke piche cha rahe," but then Kieran Pollard, he was made captain. That guy's he's a very good captain. He's had franchise success all over the world. Even I remember his first innings that I remember of Pollard was against Mumbai Indians for Trinidad. Was it against Mumbai Yeah. Indians? I forgot which team it was against, but it was for Trinidad in that Champions League. उन्हें जो मारा था वो टाइम पे, third. I don't know if it was RCB, कौन थी, Chennai. If you guys can remind me in the chat. So he's a T20 freelancer, but for West Indies he was made captain and everything. उसके बाद उसके साथ भी प्रॉब्लम कर दिया जो बंदा, he wanted to give West Indies cricket is all, उसके साथ भी पॉलिटिक्स कर दिया। तो it's ताली दो हाथ से बचती है। I'm sure the players have their own problems, लेकिन the board also help नहीं कर रहे उन लोगों को। नहीं, yeah, 100%. Nitin bhai makes a very important point. Yeah, कि आने वाले time में कि the Caribbean can probably go up and play for USA, and that will actually very likely because so Yeah, that bro. is one. Even in Canada, the league cricket that I played, like I played amateur level. Even there, I've seen like different. Even in Canada, in the Canadian team also, there's a couple of West Indies players. There's a lot of people coming to Canada as well. So Canada, America is a place where West Indians will probably move and play the cricket. But again, I mean, America and Canada, the same problem is with money. It's even worse than West Indies. Like at least West Indies is an established cricketing nation. Yeah. These guys have more problems. In लोग पूरे part time players रहते. They play in the summer, winter में नौकरी लगती है इन लोगों की. So it's like that. I don't think it will help the situation.
Yeah, 100%. I mean, there's a lot of things that go into that. But yeah, West Indies का तो cricket काफी time से बेचारे का खराब चल रहा है time. Not Hmm. able to fix it with the board. लारा के time पे भी देखे, फिर ये time पे भी Hmm. देख रहे. But इतना talent है वो country में. But Pollard will be there, I think, in Dubai. He's gonna play for the Mumbai Indians franchise. He's gonna captain it. तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि उन्हें क्या अप्रोच लेके आएंगा. सो देखेंगे अगर उन्हें Hmm. इससे पहले अगर कुछ कर दिया तो. Hmm. अच्छा First, टेकी लिव से. before before you move into the IPL stuff, let's do the fantasy picks whenever you're free. Yeah, yeah. Last comment because Tekilev wanted us to pick this. I think we missed it. Sorry, Tekilev. Indian women team management also behave like PCB. They don't change the game plan and just won the toss poll first and wanted to chase the target above 90. या कल का तो मैच बहुत शॉकिंग था मेरे लिए भी. इट वाज लाइक एकदम से गिर गए पूरे. स्मृति मंदाना चली गई, फिर 3 विकेट घटपुल के चले गए. नो गेम प्लान एंड आई थिंक देयर वाज आल्सो सम थिंग वेयर द कोच वाज ट्राइंग टू ब्लेम आल्सो. कुछ करा था उन्हें इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ये है इंडियन. आपको याद है होगा 2018 में या नहीं 2018 विंटर में जो वर्ल्ड कप था T20 वेस्ट इंडीज में, वहां पे भी रमेश पवार के साथ वो कुछ पॉलिटिकल इशू था विद मिताली को बिठा दिए थे वो टाइम पे. एंड लाइक देयर वाज द पॉलिटिक्स गोइंग ऑन. देयर इज पॉलिटिक्स इन इंडियन वुमेन्स क्रिकेट आल्सो, एंड इट डज थिंक. बट आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू लुक एट इट, द ऑस्ट्रेलियन टीम इज far ahead. This Australian team या is like Ricky Ponting's team. Meg Lanning's team is like Ricky Ponting's team. They're the best team in the world. They'll beat you in any format, anywhere, any place. That's how this team is made, right? So India, I would say they've improved. The women team has really improved in the last 3-4 years. They're missing that finishing touch, but also they're up against opposition who are the highest of quality in that in that competition. So वैसा है, like I was disappointed with the way India played in the World Cup. The last World Cup, I felt they should have qualified for the semi-finals. They didn't. So again, yeah, वो selections के भी रहते issues. जमाइमा का भी खेलती जब फॉर्म में नहीं है, जब खेलती जब फॉर्म में है, जब ड्रॉप हो जाती तो आई डोंट नो, लाइक थोड़ा सा इशू रहता वही सिलेक्शन. है. प्लान बी नहीं है बोले के लिए. लाइक देयर इज नो प्लान बी. एक ही टेम्पलेट हाँ. है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है. वही की वही टीम दिखती मोस्टली. तो इट इज अ लिटिल बिट ऑफ कॉज ऑफ कंसर्न. बट जैसा आप बोले, डेफिनेटली विल गो इनटू द टिप्स एंड चिप्स फॉर द मीरपुर टेस्ट बेबी. My fantasy ये picks for tomorrow: Taijul Islam and Aksar Patel. खत्म भाई. Very quick हो गया मेरा. अब आप बोलो. ये टिप्स एंड चिप्स से मैं आई रिमाइंड यू नॉट रैपिड फायर राउंड विद कॉफी विद करण. हैम्पर होना मेरे को. हैम्पर नहीं, अपन पैम्पर में डाल के मारेंगे बांग्लादेश को मीरपुर में. लेकिन अगर मैं अपने पिक्स दूं आपको तो मैं बोलूंगा किंग कोहली, बिकॉज किंग कोहली गोना हैव रिडेम्पशन इन द सेकंड टेस्ट. क्योंकि आप बॉलर्स बोले, मैं बैट्समैन सोच रहा हूँ. एंड आई एम गोइंग टू गो फ्रॉम बांग्लादेश. आई एम गोना गो विद लिटिन दास because I you hope also I have the have the right. confidence. I hope I have the right reports for the pitch. If it's not a rank turner, मेरे पूरे picks I mean, they're saying बन it's जाएंगे. gonna return तो होने वाले हैं. अब कुलदीप भाई का भी रोल है उसमें, वो भी देखना है. कुलदीप भाई Yeah, of was the course. star of Kuldeep bhai, man, fabulous performance. I spoke to him after the game, and he was very happy, and he was more excited. He was also very excited about the FIFA World Cup. He really enjoyed that. But yeah, you can see like that smile, and like he's really enjoying his cricket and confident. Hai wo, like he's very confident, and he's really improved his game. So hats off. चिराग भाई. Kohli Yes, कोहली भाई की सेंचुरी आ रही है. When I feel it, that's why I pick Kohli and I'm picking Litton because Litton has a point to prove. But सूखा खत्म हो रहा है धीरे धीरे. Yes, लगान में भी बारिश होती है. मतलब मैच like the drought. लगान में भी अच्छा, बारिश होती है. हम लोग बोलते लगान हैं में भी हैदराबाद में बारिश होती सुक्का है. मारने वाला हूँ, मतलब दबा के मारेंगे बोल के सुक्का मारने वाला हूँ. साकिब एंड पंत फर्स्ट चॉइस. मुस्तफा ने बोल दिया. हाँ, फर्स्ट चॉइस अक्षर पटेल एंड तैजुल इस्लाम बेबी. तस्किन इज देयर फॉर कोहली. Yeah, he's there, but then Virat Kohli Kohli is is there for everybody. Kohli is there for everybody. It's the Virat Kohli, you king. always want to back in these situations. I feel Virat Kohli will come to shine in that Australia series. I think he's waiting for that series. Him against Steve Smith. That will be a great battle. And I think he's waiting for that series. That's where you'll see the best of Virat Kohli and the back to his best in Test matches. That's what I Techie feel. Liv is asking us about IPL mini auction. Since you've pointed out the IPL, we're going to move to the IPL, Mustafa. By 2023 IPL,
हमेशा बोलते हैं, मतलब आई नो, मैं कभी कभी बोला यार आईपीएल यार, अरे यार आईपीएल आ रहा है यार, देन आईपीएल आए जब आप एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि भाई एक अलग ही Hmm. उसका एक चार्म है, अलग ही जलवा है हमारा, जो बोलते हैं मिर्जापुर में, ऐसा जलवा है आईपीएल का। और ये टाइम पावर सर्च का भी प्लेयर ऑप्शन जो आ रहा है, दैट्स गोइंग टू रियली चेंज द मैं डायनामिक्स ऑफ सुना द गेम। उसमें फॉरेन प्लेयर को नहीं कर सकते, इंडियन प्लेयर होना चाहिए इम्पैक्ट प्लेयर, ये क्या हुआ भाई? क्या है कि मैं वही बोल रहा था दैट्स द कल। रूल, दैट्स रबिश में। आई डोंट थिंक दैट शुड बी द रूल, बिकॉज भाई अगर आप सब्स्टिट्यूट करें, एनीवन कैन गेट सब्स्टिट्यूटेड एनीवन शुड कम। जस्ट। ठीक है, पहले इफ यू वांट टू डू, एटलीस्ट गिव द ऑप्शन ऑफ फॉरेन टू फॉरेन। पहले चार ऑप्शन था, पहले चार का ही ऑप्शन है फॉरेन का, उसके अंदर भी अगर आप ये चेंज नहीं कर सके तो देन दैट्स वियर्ड। बट ये भी हो सकता है कि भाई देन मे बी फॉरेन टू फॉरेन, आई डोंट नो, वो भी नहीं है फॉरेन टू फॉरेन टू फॉरेन। नहीं, नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ, ओनली इंडियन प्लेयर। दैट्स व्हाट आई सॉ दैट ऑन इंडिया टुडे, आई थिंक टुडे, दैट्स व्हेयर आई सॉ वेयर दे सेइंग दैट यू कांट, बट आई डोंट नो, आई नीड टू कंफर्म दैट न्यूज़, इट्स नॉट कंफर्म्ड न्यूज़, हम्म, सो आई विल हैव टू देखना डबल चेक पड़ेगा ऑन यार, दैट। एंड देन विल चेक ऑन दैट। मैं वही बोल रहा था इन लोगों को, बीपीएल में देयर इज पावर प्ले का एक को पावर पावर क्या बोलते, पावर भाई अप। कहीं क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड गेम है भाई। क्रिकेट फुटबॉल में आपको मालूम है सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है? ऑफसाइड। उसको 5 मिनट लगते हैं आपको, 3-4 वक्त देखो क्या ऑफसाइड होता है, आप समझ में आ जाता है। क्रिकेट में इतने रूल है, किसी को कैसा समझाऊं कि हिट विकेट क्या रहता है, वन कड़े क्या रहता है, ये उसके ऊपर आप ये सब रूल बना रहे, जस्ट कीप सिंपल मैन। आई नो दैट यू हैव टू चेंज थिंग्स इन क्रिकेट बिकॉज इट्स नॉट अ ग्लोबल स्पोर्ट, यू हैव टू ट्राई टू अट्रैक्ट ग्लोबल ऑडियंस, टू डू डिफरेंट थिंग्स, मगर ये सब आप करके आई डोंट अंडरस्टैंड मैन, थोड़ा कॉम्प्लिकेट The कर दे रहे power हैं। search thing is basically, it's I found it a bit interesting, क्योंकि एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आप डिवाइड कर सकते हैं पावर प्ले। तो 6 के वजह 4 एंड 2 में डिवाइड करके, सेकंड 2 ओवर जो पावर प्ले आता है, इट कम्स इन एनी टाइम ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ योर इनिंग्स। तो दैट कैन बी सॉर्ट ऑफ चेंज, गेम चेंजर काइंड ऑफ थिंग। बट ये जो Yeah. रूल है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, प्लेयर ही चेंज हो जा रहा, तो दैट इज अ लिटिल वियर्ड फॉर मी एज वेल। No, but you're playing 12 on 12. You're playing 12 on 12, and your 12 thing. Okay, if you want to do that, at least keep it even for everybody. Oh, Ibrahim Bhai has confirmed your news India today. This is Ibrahim today. Yes, you can't use a foreign player for impact rule unless team is playing three or less. Yeah, तो वो कभी होगा नहीं कि foreign players less होंगे, अपने पास Indian less कर देते हैं, लेकिन foreign I don't think less करते हैं। IPL is for Indian players, so please keep 4 foreign players allowed in. But Yeah. I'll tell you something. I'll tell you something. Okay, there's 10 teams now. It's not 8 teams. You have 10 teams. So if you want to maintain the standard, you have to be flexible in the foreign thing. Premier League, the Premier League is also English Premier League. It's not like Japanese Premier League or Indian or like Indian or Bangladeshi. It's English Premier League. उसमें तो रूल ही नहीं है, वो छोड़ो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक तो बढ़ा सकते हैं और 5 प्लेयर तो बढ़ा सकते हैं, because you still have so many Indian players getting exposed, and that will help them also. If you have the impact thing for sure, then you're making the rule to 5, and then you have the impact player. You can have an extra Indian player as well. You can keep that Yeah. as your Indian if you want, but make it 5 foreign, and you still have Indian players getting exposed. And if you look at it in the last IPL, every team had 3-4 weaknesses, because the standard will drop when you have too much to choose from. If it's 8 teams, I agree, keep it 4. It's an Indian tournament. Focus on your Indian players, no problem. But if it's 10 teams, if you want to maintain the standard, you have to think. And yeah, like honestly, like my opinion also, like I feel that everyone from the world should come and play. I know that politically you can't get Pakistani players. That's like I respect that. That's a political Because thing. But yeah, if you if you get remember, Pakistani players as well, then you have the whole world playing. You remember the first IPL, how good that is that what was I in was terms of coming to. standard. भाई वो शोएब अख्तर और वो क्या था भाई, वो आईपीएल शाहिद ईडन अफरीदी गार्डन्स में मैं हैदराबाद में। कभी नहीं देखा 100,000 लोग शोएब अख्तर को चैंट कर रहे वो Yeah. टाइम पे। एंड इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स, आई एम जस्ट सेइंग गिव ऑप्शन टू ऑल द प्लेयर्स, देन यू गेट मोर प्लेयर्स, एंड इंडियन प्लेयर्स विल इंप्रूव. Indian players will improve. I guarantee you that. If you Yeah. play more with you play. Why do you think these foreign players, for example, West Indies and stuff, why have they improved the cricket? Because they've played in IPL, they played with the international guys and stuff. They've also improved. They understand Indian conditions now. But also Indian players will improve if you play when you mix with other people more. You Yeah, will and a improve. lot of South African and Australian younger generation जो है, they've already played in the Caribbean, they've already played in this South Africa T20, they've already played Dubai. They're playing in a lot of variety of crickets. थोड़े काउंटी Yeah. खेल के आ जा रहे, थोड़े अपने वाले बेचारे क्या है कि खैर। Saying Indian, let's move on to our today two teams, that's Mumbai Indians and the Chennai Super Kings. First we'll start with the Mumbai Indians. These are the retention list. This is basically the players that they've kept. So Mustafa bhai, you see, Brevis पहले वहां से देखते कि उसके 162 और 57 याद आया था, क्या इनिंग्स था वो। उसके बाद ईशान किशन है, बुमराह है, जोफ्रा आर्चर है,
रोहित शर्मा, I see a very good decent 10 11 भी निकल सकती है इसमें. What do you think? Bro, look, there's two things to it. If there's injuries, you're screwed in this team. If this whole team is fit, and I'm looking at two people that I need to be fit, Surya I'll Kumar win. Yadav. No, I'll win you the IPL in 6 days, bro. With this team, Bumrah and Jofra Archer. कुछ करने का नहीं है जरूरत. Like everything is sorted. Bowlers win you tournaments. These guys, आप सूर्या को भी drop करो, 100 रन बनाओ. आप 80 पे all out कर सकते हो दूसरी टीम को. ऐसी टीम है ये भाई. And then आप देखो Brevis, up and coming youngster. हमारे Arjun Tendulkar recently scored 100. He's up and coming. Then you have Arshad Khan. This guy is a very good player. I like the looks of him. We're forgetting Tim David, Tristan Stubbs. Yeah. These guys are Tim David. Tim David. BBL खेल रहा है. He's playing BBL and he hit a 46 day before yesterday. Tim David, Tristan Stubbs, and Deval Brevis. This is a dream middle order. In 4 years' time, these will be the best batsmen in the world, in my opinion. They'll be in the top 6 in T20 cricket. These guys are superbly talented batsmen. These guys, okay. You have Rohit Sharma, gives you experience. Tilak Verma, outstanding. He's from Hyderabad, a very good player. Domestically, he's very proven. He played very well in the IPL last year as well. Surya Kumar is the best batsman right now in the world, right? So you have him. What more do you want in this team? What you want is, I'll tell you, you cannot have injuries. अगर कोई injured हो गए 2-3 player, फिर आपको problem होगा. There are a lot of injury prone players here, from Rohit to Bumrah to Jofra Archer. There's a lot of injury prone players, so that's what they have to focus on. You cannot have injuries in the tournament. If you have a full fit squad, this team will reach the finals and lift the trophy. This team will, but like if I'm looking at their wallet, then who do we purchase? 20 crores hai. So like coming to the table, 16 players retained, overseas 5 hai, 74.45, 20.5, and nine available slots. Yeah, so that wrist spinner is definitely there, which Chirag bhai also has pointed out. आदिल That रशीद को you ले लो यार, आदिल रशीद, एडम जंपा, किसी को भी ले लो. You have players available. They won't go because I think a lot of money will be given to the all rounders. So I think जब Sunrisers Punjab का पर्स जब नीचे आएगा, these leg spinners will be available. So get a leggy, get a. I know that foreign leg spinners पे उतना नहीं देते, but they've proven Adil Rashid, Adam Zampa, they can play in any conditions, any time of the day. So I would go with one of these two and get them at a good rate. I know they don't have too much money to spend, but nikalo yaro, you can get one of them, I'm sure. Dream ODI team of India: Prithvi Shaw, Ishan Kiran, Virat Kohli, Surya Kumar Yadav, Shreyas Iyer, Pandya, Jadeja, Yuzvendra Chahal, Kuldeep, one of them. Mohammad Siraj, Bumrah. Wow, this guy, bhai, info Satish, or yeah, if I'm taking your name rightly, thank you for joining us. Hope you like and subscribe. But yeah, this team, man, Mustafa, if I'm actually reading this, I don't know, Prithvi Shaw he has to prove himself for me. But the He rest of had them, me man, at what do you Prithvi think? Shaw, man. That's my favorite, bro. I love Prithvi Shaw. नितिन पाजी says मुंबई इंडियंस को जैम्पा के लिए जाना चाहिए, इनको लेगी. या दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग. स्पिनर अगर देख रहे हो अपन, जैम्पा का फॉर्म बीबीएल में भी जबरदस्त है, अभी कैप्टन कर रहा है उन्हें, एंड 3 विकेट उठाते जा रहा है लगातार. तो या जैम्पा इज वन फॉर द पब्लिक. तिलक वर्मा माइट बी द नेक्स्ट युवराज सिंह. तो धोनी का करियर ये भी रोकेगा? आई डोंट थिंक सो. One more thing I'll tell you, Fez, they have to do is they have to replace Kieran Pollard. That's a huge hole to fill. Kieran Pollard is what has been a Mumbai Indians legend. He should have a statue outside the Wankhede. What he's contributed for that franchise is unbelievable, and he's done it throughout his career. There was a time where he had a very low phase. They stuck with him. Credit to the owners for sticking with him, and he got them a championship again. Like he's an outstanding player. He was a brilliant asset for them. How do you replace that? Ben Stokes is out of their reach. Sam Curran is out of their reach. Cameron Green is someone they can maybe get. That's a possible option, but I think he will also go for a lot of money. So then who do you go for? Do you have anything anyone in mind there? Huh? I have no one in mind actually, if I am actually being very honest, because see, when I look at Kieran Pollard, this guy is a captain material. This guy is a batsman, bowler, and a fantabulous fielder, man. We've seen n number of catches on the one-handed catches. वो भी उसकी gold G-Shock डाल के जो उन्हें खेलता, iconic gold G-Shock. So yeah, I really filling those shoes is going to be hard. Maybe who else can they take, man? I'm really scratching my head around this. Will Arjun Tendulkar get match this IPL? I think he will, because you're playing everything like rapid fire, bro.
अर्जुन तेंदुलकर दे दो यार वो चांस, लाइक मेरे को लास्ट ईयर समझ में नहीं आया उसको चांस क्यों नहीं दे, दे गॉट नॉक्ड आउट इन 7 गेम्स ब्रो, दे दो ना चांस उसको, लाइक व्हाई नॉट, आई नो द थिंग इज लुक, उन्हें खेला भी तो प्रॉब्लम, नहीं खेला भी तो प्रॉब्लम, ऐसा सिचुएशन है अर्जुन तेंदुलकर के साथ, खेला तो बोले अरे नेपोटिज्म, नहीं खेला तो बोले कहीं को नहीं खिला रहे, तो देयर इज, इट्स ऑलवेज ही इज नेवर गोइंग टू हैव अ इजी लाइफ इन दैट वे, Hmm. but being Tendulkar, Sachin Tendulkar's son, लेकिन yeah, he can get a game, I think. Why not? Also, Yeah, it I just mean, shows ki, like, he got an easy way, but it's not that easy to get into the 11, right? If that was the case, he should have got a game last year, but he didn't. So he has to yeah. work for what. Yeah, and apart from that, like, जैसे तुम बोले 7 कितने के games हारे बेचारे उनला, and it was a very bad show for Mumbai, but like देखना पड़ेगा अभी अर्जुन भाई का क्या सिचुएशन होगा, बट फिर उनको रहेगा, आएगा फॉरेन प्लेयर खिलाने के लिए, मैच चाहता हूँ तो Dikkat. अमित शिमरा, दिक्कत आएगा फॉरेन प्लेयर खिलाने के लिए, तो अमित मिश्रा आया, अमित मिश्रा तो प्रूवन स्पिनर है यार, अमित पाजी हैज एक्चुअली हैड अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट अस मुस्तफा. And he has a good record for us as well. Exactly, two ways it goes, Amit Mishra. Yeah, Amit In the Mishra is an IPL legend, man. Like this guy, he's got hat tricks. He's got important wickets. He helped teams defend scores of 110, 100 as well. So yeah, he's an IPL legend in a way. Yeah, can they even fit an overseas player? If bought पहले से Brevis, Stubbs, David और Archer है यार, that's actually a good मैं point. सच बोला, मेरे को आर्चर का स्टेटस नहीं मालूम, आई डोंट थिंक उन्हें हर गेम खेल सकता, अब नहीं मालूम, अपेरेंटली मुंबई इंडियंस विल सेंड हिम जोफ्रा फॉर लाइक, आर्चर का अगर मैं सही याद करूं, he's not played a lot of cricket also this year. I think he was injured most of the time, and then उन्हें खाली अबू धाबी you'll में have to इंग्लैंड have a replacement, you'll have to have a backup इंग्लैंड bowler. लायंस इंग्लैंड लायंस वर्सेस इंग्लैंड का वार्म अप मैच खेला अबू धाबी में, उसके अलावा he hasn't played cricket. They have Berendorf as a backup to him. But I guess you need to get another all rounder, like a bowler who can fill in the boots as well. Archer can also hit a few, so yeah, they'll need a backup because I don't know Archer हर game खेल सकता नहीं खेल सकता. With Mumbai Indians medical staff and everything, anything is possible. उन लोग अमेरिका सीधा भेज देते फ्लाइट पे, वहां पे जाके पूरा ठीक करा के लेके आते. A lot of international cricketers felt that they prefer Mumbai Indians for rehab compared to the NCA or the other boards, their national thing, academies and all that. They go to America and get it done. For Mumbai, they prefer Mumbai Indians fitness center and medical center. Yeah, I mean, क्या लेवल होगा फिर स्टैचर उसका, अगर अपन सोच रहे हैं एनसीए को लाइट लेके यहाँ जा रहे, तो इट्स बेसिकली लाइक नेक्स्ट लेवल होंगे फैसिलिटीज, एंड ऑब्वियसली वी नो हु इज फंडिंग इट, सो Yeah. जस्ट Tough लुकिंग calling. एट द रिलीज्ड प्लेयर्स मुस्तफा भाई, जो प्रिजनर्स थे, जो क्रिमिनल्स थे जिसको रिलीज करे, अनमोलप्रीत सिंह, आर्यन जुयाल, बजिल थम्पी, अरे रे, डैनियल सैम्स, फैबियन एलन, उन्नटकट, करण पोलार्ड, मयंक मार्कंडे, अश्विन, They राहुल should have भूपति, kept, they रायली should have kept मेरेदिथ, एंड Markande यार टाइम maybe. Unatkat, they should have kept Unatkat. No, maybe Markande या Unatkat को रख सकते थे. Daniel Sams maybe as a backup to Archer. Daniel Sams is a very good T20 player. They could have kept him, but I think it's a good release. They've released a lot of, Murugan Ashwin नहीं चला उनके लिए. Even Markande, to be honest, उसको इतने chances नहीं मिले, उन्हें नहीं perform कर रहा. Basil Thampi नहीं चला. So I think Fabian Allen also didn't work. So yeah, they did yeah, a he good did. job in the release. They took out the dead wood. If you don't want me to be too critical, yeah. Mustafa bhai, you're wearing blue surprisingly today, and I'm wearing yellow surprisingly today. That was a very mere coincidence. But the next team, Yeah. you guys, and whoever is going to watch, please put on your sunglasses because it's the bright yellow, dirty fellows, Chennai Super Kings. तो रेडी रहो जा, आप लोगों के आंखें खुद दर्द देने वाले हैं. बात दिख रहा ही नहीं मेरे को. उस अंबती रायडू, दीपक चाहर, डेविन कॉनवे, प्रिटोरियस, तीक्षणा. या ये कौन है भाई? तीक्षणा, मती. मतीशा पथिराना, मिचेल हाँ. स्टैंटनर, मोइन अली, एम.एस. धोनी, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, राजवंदर हंगरेकर, रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, सिमरजीत सिंह, शुभ्रांशु संपत्ति, and Tushar Deshpande. Now they have a total of I think, 18 players retained. They have 4 slots. They have 74 crores spent. They have 20.45 left, 7 available slots with only 2 overseas slots. So yeah, this team, Mustafa bhai, what do you think?
if I give my honest opinion, doesn't matter what the team is, bro. Until Dhoni is there, when Dhoni leaves, then you can discuss the team. Because so many times मैं बोला कि भाई this is a grandfather's team. They don't have anybody. Watson 40 का था, उन्हें जीत गया, उसके साथ जिता दिया, फाफ के साथ जिता दिया, क्या क्या की कराने. So I don't have any thoughts until Dhoni is there. When he leaves, then I can analyze the team. This guy made Sam Curran a match winner. He made Moeen Ali a match winner. Moeen Ali, the way he was utilized by Dhoni, I think it's the best he's been utilized. Number one down आके खिला रहा उसको जो confidence दिया. Sam Curran को क्या improve करा उन्हें. He Santner turned को him like into a finisher, right? He turned him into a finisher. he made Santner like Jadeja's replacement, bro. Like who would have thought, man? Like Santner winning games for them. Shivam Dubey को भी उन्हें करा देता. देख लो ये season. Shivam Dubey will start scoring runs and getting wickets. Nitin Pasi says that he might go for Akil Hussain, and yeah, Akil Hussain, the way he's playing, I wouldn't be surprised if they do. But they already have enough spin in that. They have Santner, right? They have Santner. They have Santner. Yeah, they have Mitchell Santner, number 7. They have Moeen Ali. Moeen They Ali have, as well. Yeah. they have Ravindra Jadeja. I would go with a fast bowler, man. I'd someone very quick, maybe. Go with a quick fast bowler who's available, and put your money on that. I think that's what I would do. I think from the top, if we're looking, Musti, we have Ruturaj Gaikwad, we have Devon Conway, right? Then we have Ambati Raidu. Deepak Chahar is also there. Deepak Chahar is there. So again, we have injury prone. Injury prone, but if he goes on, he's a good IPL asset to have. So so you have Shivam Du. So we have a lot of players, bro. Even Pretorius can bat a bit. Dhoni hai, obviously Dhoni to bhai forever love hai. But अगर ये 18 अपन देख रहे, right? And जडेजा नहीं है, नहीं जडेजा है. जडेजा है भाई, is there, man. He just stepped down from captaincy. आप थोड़ा फुल स्क्रीन करके देखो, आपको शायद नहीं दिख रहा. अरे नहीं, उसके साथ वो कंट्रोवर्सी हो गई थी लास्ट सीजन, फिर उन्हें नहीं खेला, फिर इंजर हो गया था, पता नहीं क्या हो गया. फिर वो आया ना, गले मिलने का फोटो आ गया था धोनी एंड जडेजा के. It's all right, nothing is gonna. भाई who's gonna leave? आप बोलो मेरे को, who's gonna leave Mahi way, bro? No one is gonna leave Dhoni, bro. I don't think anyone in their life would want to leave a captaincy when your captain is Dhoni. I think no one is going to leave that team. Unless Dhoni look, I'm also interested to see how Dhoni will perform again. This is the third season where he's not playing international cricket or regular cricket. It's not easy, bro. Like I'll tell you something, like you can be the best player in the world, you can be the best captain in the world, it can be anything. Like if you're not playing regular cricket, to come back and perform at that level, it's very difficult. So Dhoni's performance with the bat and with the gloves is something that I'm going to look at. Like I know we shouldn't be questioning MS Dhoni, like because of the lack of cricket and he's getting older now, how is he keeping himself fit? Match practice is always the best practice. Next में आप जितना भी कर लो नहीं रहता. So how is he, that's what I'm interested in. I know it's MS Dhoni कुछ भी कर सकता उन्हें, लेकिन I'm going to be looking at him. If I'm looking at from a cricketing brain, how does MS Dhoni perform? But what he does smart, what he's done in the last 2 years, he has covered for him. So he doesn't put too much onus on him. He understands his abilities. He's not like Cristiano Ronaldo where he wants to play every single game or ever he wants to have the ball all the time. What does he do? He pushes himself down the order. He promotes Moeen Ali. He used to promote Sam Curran. He'll promote Jadeja above him. This is what he'll do. He plays it smart. He understands his limitations and everything like that. And then that's why he's a successful captain. It's not because he's a great player, he's a great captain. No, he understands his limitations right now. उसको मालूम है कि भाई मैं वो level पे नहीं खेल सकता हूँ. But he picks a squad where he can cover that, where he can cover himself, and that's a very big art. I'm not saying कि भाई अरे आसान है. Well, it's not. First of all, ego को दबाना पड़ता है. उसके बाद you have to get the right resources, and he has that. The way he picks his team, he picks everyone who can bat and bowl. And if they can't bowl, he'll make them bowl. And that's why he's such a successful captain, because he has people who can provide in all departments, from Moeen Ali to Jadeja to even Deepak Chahar can hit with the bat. Jadeja can hit with the bat and with the ball. So he has that covered, and if he thinks he's like the weak link, he'll cover that. It's not a big deal. Yeah, and perfectly. Like I think the best thing that he does, he assesses his strengths and weaknesses, and he knows what threats are there. If he's not going to be there, then he like you said, promotes. And Moeen Ali है, Moeen Ali को convert कर दिया, Santner को convert कर दिया, Jadeja को तो क्या captain तक promote कर दिया भाई. तो like definitely is one. ये comment देखो, उनटकट right? उनटकट को भी इन्हें मैच विनर बना दिया था राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में. उनटकट ही था वो. Like this is another problem. So under Dhoni, I think even Shivam Dubey will smash it. I think
right? But then when they go back to another captain, they won't play on that level. So he has that magic in him. Because Unatkat after that, kya pita uske baad, like when he moved, बहुत बुरा from पिटा यार, yeah, yeah. बहुत So पिटा. under Dhoni, कोई भी match winner बन जाता है. He's that kind of the Midas touched, like he has I that think it's that magic. belief he gives. I think it gives the belief to the player कि भाई आप जो करना चाह रहे करो, टेंशन नहीं लेने का. वो जब टेंशन is off your shoulders and you know that Dhoni is there to probably back in the day तो बोलूंगा Dhoni is there to finish off the game. आपको डर नहीं Hmm. रहता. I think वो भी एक चीज है. मुस्तफा भाई आप रोहित भाई के साथ क्यों नहीं आए? ड्रॉप बाबा कुलदीप साई सब थे. मुस्तफा भाई अरे नहीं, बेसिक. मुझे नहीं हाँ. पता था. मैं आऊंगा. रोहित भाई का मैं बात करूंगा. एंड आई कम. ये मिस कर दिया था. आई वॉच द वीडियो. मेरे एक्चुअली लास्ट वीक मेरे लिए बहुत हेक्टिक था, तो फैमिली इमरजेंसी आ गई थी, तो मैं सबके साथ इन टच नहीं था. लेकिन मैं बात करूंगा एंड आई कम बैक. आई कैन बिलीव आई मिस दैट, बट आई डेफिनेटली कम ऑन एंड होपफुली डिस्कस विद देम. इट्स ऑलवेज फन टू टॉक फुटबॉल. The people who were released from the Chennai squad: Adam Milne, Hari Nishant, Chris Jordan, Dwayne Bravo. We know kya legend hai unhe game ka. Dwayne Bravo is also one of the most inspiring cricketers in the IPL. From the bat, from the ball, we've seen him, bring Chennai from, finished games को ने alive कर दिया था. बरी हो गया था मैच लेकिन निकाल के लाता था. Bhagat Verma and his infamous obviously slow delivery. Asif, Jagdishan and Uttapa, the medicine ball guy. Yeah, man. देखो उत्तपा को मैच विनर बना दिया था इन्हें धोनी at this age, like 34, 35. I think they should have kept Milne because they need a fast bowler. I feel Chris Jordan is also released. They need, so they will go for quick bowlers. I think in the auction that should be their priority. Look for fast bowlers and focus on that. I think they have batting. Maybe you can add another extra couple of batters. That's what I feel. I feel that they should go for fast bowlers and stock up over the Chennai Super Kings. KM Asif also, man, he had good seasons in between, so I'm a bit surprised उसको भी release कर दिए. Apart from that, yeah, those other ones are pretty much straightforward. Dwayne Bravo, तो like he's done. Uttapa's also at that age where he's in retirement, so yeah, otherwise it makes sense. Yeah, 100%. And I think where, like you said, they're going to go after fast bowlers. That is looks like the number one priority. What if just a very weird thought. What if they bring in Harry Brook, bro? Your team में अगर Harry Then Brook आ गया था, it's game over for everybody, bro. Harry Brook धोनी again. and Harry Brook. इन लोग का पर्स कितना है चेन्नई का? 20 है शायद 20 कुछ है. मुश्किल है, but if they he might go 20.45, yeah. I think Harry Brook might go either Punjab or he might go whoever has the third highest purse, because I think he will be the third most expensive player in the auction. Again, you never know if everyone goes for all-rounders and Chennai have a bit of cash, so they can spend it on him. Lekin knowing Dhoni, he doesn't go for these kind of players. He'll go more CSK, utility. yeah. Nitin Basi says like CSK Sam Curran वापस आ गया तो Pretorius और करण भाई हिला के रख देंगे, या कर बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल. definitely. हाँ, सैम करन तो बहुत अनबिलीवेबल फॉर्म में है. बट सैम बैट और करन बॉल का के साथ प्रोवाइड करेंगे. इमीडिएटली नेक्स्ट अगर अपन टूर देखे थे इंग्लैंड के, सॉरी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ऑनलाइन काफी पिटा था, याद है अपन बोले थे कि भाई सैम देखो करन को. छोटे ग्राउंड्स में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में बड़े ग्राउंड से तो ही मेड द मोस्ट ऑफ इट. लेकिन ही इज अ यूटिलिटी प्लेयर. ही विल गेट यू विकेट्स, ही विल गेट हिट आल्सो, बट यू नीड विकेट्स. ही इज अ गुड डेथ बॉलर एंड ही प्रोवाइड विद द बैट. तो ही गिव्स यू एवरीथिंग. देन व्हाई नॉट टेक हिम, राइट? Maybe he won't be as consistent as he was in the T20 World Cup, लेकिन he has that ability there, and based on his ability, based on his past performances, I think it's good enough to take a player like that in your team. Yeah, 100%. I think सही है. रह गए अपन, अभी हो गए अपने 8 टीम, रह गए अपना टीम. कल hopefully we'll be discussing the Royal Challengers Bangalore and the Sunrisers Hyderabad. Always get RCB. the South Indian derby. As we say back in Hyderabad, Bangalore हमारा neighbor है, 7 घंटे दूर है. But yeah, it's always a special game. And There's two Hyderabad के problems. लिए तो Hyderabad have to get Ben Stokes, but if they get Ben Stokes, I don't know if Ben Stokes will be fit. That's the problem I'm having. मैं हूँ, अगर मेरे पास हैंडल है, मैं तो बजाते जाऊंगा वहाँ. Okay, जो भी है वो, I'll keep raising that banner until I get him. You have the highest price, you pay whatever you want for him, but I need him to be fit. I need him to be there because आपको कप्तान मिल जाएगा. कप्तान नहीं है, केन विलियमसन नहीं है अभी. कप्तान मिल जाएगा, बैट्समैन मिल जाएगा, बॉलर मिल जाएगा, फील्डर मिल जाएगा, बेसबॉल मिल जाएगा, और क्या होना है भाई? मिल जाना I है.
take Ben Stokes any day of the बट द year. ओनली लेकिन प्रॉब्लम इज दैट पैडल पे बीच में फोन आ जाते, फोन पकड़ के उन्हें कॉल पे रहते, फिर वो पैडल जब नहीं, तक और छुड़े ना। ये भी प्रॉब्लम है कि भाईजान भी कभी भी इंजर हो सकते हैं, कभी भी ब्रेक ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यू नो लाइक Yeah. देयर इज एशेस कमिंग आफ्टर इन द समर। आई डोंट नो, मूड हो गया, बोलते कि भाई नहीं, आई वांट टू फोकस ऑन द एशेस, आई एम गोना स्टेप डाउन फ्रॉम द आईपीएल आफ्टर ही गेट्स पिक। फिर क्या करते? हाँ, yeah, but I यही think प्रॉब्लम है। कुछ रूल डालना है और कमिटमेंट That's का। why I have this sly feeling that maybe someone like a Sam Curran will become more expensive or thing, but Ben Stokes को लेना ही लेना है भाई, कोई आपको option ही नहीं है। Like you have the highest price, you have to get him. Mumbai can judge Yeah, Archer fitness when he plays for the franchise in SC T20 in January. That's a very good point. They can judge his fitness, but also you know, Ibrahim bhai, I think it also depends on his longevity as well, right? He might get through the SA T20, but then you know, will he be able to play consistent cricket sustain. up until the Yeah, IPL, sustain that? I know that his injury was a freak injury, so hopefully he's recovered from that and he's okay. वो fish tank का issue था, like पूरा हाथ कट गया था उसका fish tank में, वही। so it was a हाँ, freak injury, and it's not something which is common. But a fast bowler can have different other injuries as well, and he hasn't played cricket for like a long time. So you know, muscles भी नरम रहेंगे, so you know, body भी नरम रहेंगी. It's not going to be as he's not going to be on that level. yeah, like He still has to one get into it, but series, yeah. yeah, but One what series. Ibrahim said is good. At least he has a few tournaments, a few series ahead of time to judge his fitness. But if him and Bumrah are firing, then I don't know. I have a question for you. Indian cricket, we've seen so many injuries, right? But why are these injuries so long? Ravindra Jadeja, Deepak Chahar, Jasprit Bumrah. Why are these? Okay, Jofra Archer ka to malum hai, like you know, think, but like other teams, like you know, if they get injured, they come back. Like they come back. Shaheen bhi aa gaya, theek hai, ab injured ho gaya unhe. Lekin they don't have as many injuries. India have long term injuries, और वो आईपीएल में नहीं दिखता। आईपीएल में तो हर मैच खेलते पूरे। Yeah, quite a very good question. Actually, मेरे को भी इंजरी हो गई है सुन के, but नहीं मालूम, नहीं, आई आप डोंट देखो थिंक इट्स रविंद्र जडेजा लाइक, को अब मैं कभी एक्चुअल इंजरी बोलता हुआ हूँ, है, जडेजा को नहीं हुआ। कभी इंजरी आईपी एशिया कप में हुआ था, राइट? अब वो टाइम हो हम्म, गया भाई, 3-4 महीने हो गए, लाइक पूरा मेरे जिंदगी को वही बदल गई। लगता है कि भाई अर्जेंटीना शॉर्ट वर्ल्ड कप चैंपियंस हो गए, क्या क्या की हो गया मेंटली वो टाइम में। मेंटली कैसा रहता है कि आई थिंक 20 ओवर गेम है, सस्टेन कर ले सकते हैं, इट्स नॉट अ इतना भी यार इशू नहीं, मगर बट लॉन्गर फॉर्मेट विल बी उन्होंने भी मोर। नहीं खेल रहे इंडिया के लिए। क्या है कि देन दैट दैट इज समथिंग दैट विल हैव टू असिस्ट व्हेन द आईपीएल, बट क्या होता है आईपीएल आए जब तक, और 6 4 5 महीने हैं, 4 5 महीने हैं, तो 5 महीने में तो कोई भी रिकवर हो जाएगा, बट आई डोंट नो अब वो इंजरी की कितनी लेवल है, क्या ग्रेड ऑफ टेयर है, क्योंकि एवरी टेयर हैज डिफरेंट काइंड ऑफ रिकवरी रिक्वायरमेंट। अब जैसे ग्रेड ए है तो नो प्रॉब्लम, इट्स ग्रेड 3 है तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, तो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द इंजरी। फिर अगेन कितने टाइम से मतलब कॉन्स्टेंटली क्रिकेट खेल रहे, वो ब्रेक भी मिल जाता, so a lot of things goes into it, But I it's think. strange, bro. Like you know, like I find injured हो रहे हैं, मगर the length of time it's taking to recover is very abnormal in my opinion. इंजरी होती है, वापस आते हैं फिर इंजरी से, ये भी नहीं हो रहा। Like you know, और मैं एक प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, 4-5 प्लेयर की। बुमराह है हार्दिक पांड्या या भाई, हाँ। हार्दिक पांड्या जब से वो एशिया कप में हुआ तो 2018 में, उन्हें कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रहा ही नहीं। हम्म, You know, Ben Stokes को भी था इंजरीज, मगर आता उन्हें वापस। Like you know, where are these guys, bro? I don't get it. Like you know, there is some issue. They have to work on that. I don't understand why they're not playing either it is the consistently. either it's the physical aspect or it's the mental aspect of not getting over. There are two things. Whenever when you have an injury, there is one कि आपकी range of motion, ये वो आपकी हड्डी अटक गई, आपको एक होता है मेंटल रिकवर करना, कि जब आप बीमार होते हैं आप ये नहीं सोचना कि भाई मैं बीमार हूँ, मैं वो बीमार हूँ बल्कि आप बीमारी से जाते हैं, आप यू हैव टू फाइट इट, जो अपन कोविड में देखे टेक्निकली। So there are two aspects to even an injury, कि भाई either you physically also recover and then you mentally also recover out of that. आप थोड़ा आप Yeah. hesitant रहते हैं, थोड़ा आप getting back into it, you get a little fear, अरे नहीं उस्ताद कुछ दिख रहा, कुछ लग रहा, अरे कुछ लग रहा, वो खोले जब तक नहीं होगा तो I don't know how these guys rehabilitate and how they come back, facilities क्या है, क्या डाइट ले रहे, क्या नहीं ले रहे, it takes a lot of things to come back, and then Yeah. then again the amount of cricket that they know they have to play, वो एक चीज और आ जाती है भाई, अगर मैं एक इंजरी के पीछे फिर मेरे को 12 महीने बैठना पड़ेंगे, अच्छा आई टेक अ बिगर ब्रेक, देन फॉर द लॉन्गर रन आई कैन कम, तो वो भी हो सकता है नहीं ऐसा। यार, मगर लाइक यू नो, पूरे प्लेयरों के साथ ऐसा टू मच है, इट इज स्ट्रेंज। आई डोंट थिंक इट्स नॉर्मल ऐसा, लाइक यू नो, इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो भी सारे प्लेयर के साथ ऐसे ही हो रहा। You know, Rohit Sharma bhi, like, you know, he's injured like in the last 6 series. Apart from the World Cups, what has he played, bro? He's getting injured in every series Yeah. from that after the IPL. England series में टेस्ट मैच नहीं खेला उन्हें, फिर लिमिटेड ओवर्स आया, फिर वेस्ट इंडीज टूर में नहीं खेला उन्हें, फिर जिम्बाब्वे तक ठीक है चलो नहीं खेले, एशिया कप खेला, फिर बीच में कहीं नहीं खेला उन्हें, फिर अब नहीं खेल रहा।
So I don't get it, man. These guys are consistently getting injured and they're not recovering in time. Archie recovered from the fish tank injury last year before England summer. He is now coming back from a lower back injury he sustained when he was making his comeback last year during a club match. Okay, that's good information. I didn't know that he fully recovered, because what I last heard in I'll tell you, in the summer, which was in July, that yeah, he had a back problem, but also that fish tank injury, like it wasn't fully fixed, because it was a very deep cut and it was a very big issue that it wasn't fully fixed, and it was still causing problems. He had to go through surgery and everything. Even after the surgery, it took some time to recover. That's what I heard, but it's good to, and that's what I'm saying. Like, so you said lower back injury, I didn't know that, and that means because he's a fast bowler, he bowls 150 plus, he's gonna get more injuries. So it'll be, you have to wrap him in cotton wool and see his progress very carefully and analyze that. नहीं तो यही problems होते जाएंगे fast bowler के लिए. Question miss. ना वही नितिन पासी का क्वेश्चन ये है कि इंडिया को हर फॉर्मेट में अलग अलग यू विल हैव टू गेट देम get players to play in a different pool. That is difficult in India भाई. जो मुस्तफा भाई अभी point अलग अलग ही फॉर्मेट खेल रहे हैं. अभी देखो उन्हें कहाँ T20 में लाइक नहीं खेल रहे हैं लोग, जो बड़े प्लेयर है ये वो उतना नहीं खेल रहे. उन लोग खाली बड़े टूर्नामेंट्स पे आ ले रहे. जो बायलैटरल सीरीज होते, साउथ अफ्रीका अगेंस्ट जो बायलैटरल सीरीज थी वर्ल्ड कप से पहले, कौन खेले? कोई भी नहीं खेले. पूरे यंगस्टर्स थे. शिखर धवन कैप्टन था. तो उसमें भी सेपरेटली टीम है, मगर फिर भी इंजर हो रहे. फिर भी दे नॉट लास्टिंग for a period of time. They're not being able to come back from injury, or they're not being able to stay fully fit in important crucial situations, or even for longer periods in general. It doesn't have to be a crucial series, but as an athlete, you need to have that thing. And if you get injured, that's completely fine. But I'm also talking about the recovery rate. The recovery rate is taking too much time. इतना time नहीं लेना चाहिए. आप professional cricket इतना modern medicine भाई इतना advanced है technology में, हर चीज मालूम हो रहा है आपको यहाँ पे. like कुछ भी पूरा details है. With professional athletes, the amount of money invested in sports medicine, I don't think it should be taking this long, bro. And I'm not talking about one injury, I'm talking about plenty of injuries. That's why I'm concerned. If it was just Rohit Sharma or if it was just Jasprit Bumrah, I completely understand. He has a proper injury. Takes time, but this is all the players, the big players. Virat Kohli is, I think, the only player I think from there who doesn't get injured, and he comes back, like if he does get injured, or he takes a rest. But Virat Kohli is the fittest guy in the world, so in cricket. So that's an exception. Apart from that, everybody is getting injured and they're not coming back in time, in my opinion. Yeah, that's rightfully pointed out. because अगर अपन ये देखो लिस्ट, चिराग भाई क्या बोल रहे? पढ़ो फैज प्लीज. रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, मोहसिन खान, Jadeja, all are injured. Jadeja is injured for quite some time. Bumrah has been for the longest time. Mohammad Shami has come and gone. See, Shami came and went. But before that, he was also injured. Before he came, he was injured. Then he came back. Yeah. Then he didn't get selected, and then he got selected, and then he got COVID. That's okay, fine. And then now he got injured again. So I don't know what's going on, bro. It's a paranormal. अब उससे भी ये भी क्या होता है यार, like you said, शेखर धवन एक इन लोगों का एक टीम बन गया था, अलग अलग टीम बन गया था. बट क्या होता है, अब ये सब अच्छे चलते रहता है, ये कोर टीम बनती होती है, फिर ये जो इंजर्ड प्लेयर है वापस आ जाते सीधा फ्री में. जैसे रोहित शर्मा इज फर्स्ट टीम प्लेयर, शमी. So there is always going to be an imbalance in that part of Indian cricket. So that is one problem that is going to really be a big problem for us. But Rasika Kohli, नाम में कोहली है, लेकिन she's going to support CSK. Good to Chennai Super Kings, bro. One thing about CSK, they have fans all over the world. भाई मैं देख रहा था एक YouTube वीडियो 2-3 साल पहले, अमेरिका में कहीं सियाटल में कहीं सब येलो आर्मी वहां पे डांस वांस शुरू कर दिए थे. और अवेश खान तो बुखार से वापस ही नहीं आए. वही यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई. चिराग भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा. It's a cause for concern and it should be brought up in press conferences, or it should. But I'm pretty sure, but there is someone will be discussing this, because like you rightfully pointed out, for me as an injury, I can say about the two aspects. It'll take time, but मेरे खुद इतने इंजरीज हुए, लेकिन even you have had a lot of injuries. मगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बीसीसीआई को के लिए खेलते हैं, आपके पास अनुष्का शर्मा बीवी है आपकी, like it's different, like so it's different. What I'm saying is, like for example, I'm not saying they're making money, so it's not that. It's just that in this the level of look at the comparison, look at other teams, look at things, they recover, they come back. That's what I'm talking about, right? It's not like English players don't get injured, Pakistani players they do get injured, they come back. So that's what I don't understand. Why it's happening with all the players. You see the Pakistan team, we're saying यार वो उसको कई को खिला रहे, मगर वो प्लेयर खेल रहे हैं. रिजवान बाबर पूरे फॉर्मेट्स खेल रहे हैं. They're playing every single
फॉर्मेट शाहीन ठीक है इंजर हो गया, लेकिन दूसरे तो खेल रहे, राइट? दूसरे आते हैं प्लेयर्स, दे कम प्ले, दे हैव दैट थिंग. फास्ट बॉलर्स आई स्टिल अंडरस्टैंड इफ यू गेट इंजर्ड, बट यहाँ पे बैट्समैन भी इंजर हो रहा, स्पिनर भी इंजर हो रहा, फास्ट बॉलर भी इंजर हो रहा, सब इंजर हो रहा. तो Yeah, 100%. I understand your point, and definitely I'll raise it to Ravi Shastri in an email tonight. I'll tell him रवि to शास्त्री Shastri. क्या करेंगा भाई? He'll say, he'll say, मुझे comment get तो the, मारेगा. get ready for the IPL auction. He's gone to the boundary like a tracer bullet. Because द्राविड को बोले तो फिर लक्ष्मण आ जाता. No point. Yeah, that's one thing. And one thing I wanted to discuss first that I didn't discuss with you is how was the World Cup final, man? I Yeah, watched oh it. my God. Oh. What a night, what a match. 7 o'clock था मेरा टाइम. तो भाई मैं सोचा था बाहर जाके देखूंगा, बट एक बार जब वो मैच शुरू हुआ उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने को. एंड भाई इट वाज गुड दैट आई डिडंट गो आउट, बिकॉज भाई मेरे पाँव फ्रीज हो गए थे. हालांकि मेरी टीम खेल रही नहीं थी. इट फेल्ट लाइक समथिंग एल्स आउट ऑफ there is no script in the world that no writer in the world could write these kind of scripts. No writer in the world could predict. No predictor in the world could predict this thing कि भाई ऐसा फाइनल होगा. Messi won it, but Mbappe was the player, man. Mbappe क्या player है. 3 penalties मारना Emilio Martinez को in that form, it's not a joke. And that goal, bro. He heads it down, gets back Yeah. the pass, and smashes it in the bottom corner. That was unbelievable. Mbappe is like the best player in the world for me right now. What he did was unbelievable. I'm like, I know everybody's happy that Messi won, and like he's the best player in the world. He's not my favorite player. I'm not the biggest Messi fan. I always knew he was the best player in the world, and he's won the World Cup. So everybody who says he's not, the GOAT debate, everything is done. Like, he didn't win the World Cup for me. Martinez won them the World Cup. Emi Martinez. You might be thinking I'm saying Lisandro. No, Emi Martinez won them the World Cup. Ridiculous saves, bro, in the penalty shootouts. I guess The last moments of the last and then angle of that the save, game. yeah, the last second that save he did. Oh my, Kulu Manali. वो पक्का गोल था भाई, पक्का गोल था वो. And अगर आप देखो come वो, if you Argentina go the back, back. Kulu Manali could have just passed it in the left to Mbappe. Mbappe was khali and free and not offside. He could have just given a pass, but obviously in those situations you can't really think a lot. And when Emilio Martinez, 6'4", 6'3" person is coming after you with those big, He wide. has a messed up attitude, but he backs it up with his actions. But one thing I'm upset about, I mean, it's your moment, you enjoy it. But भाई एम्बापे को बहुत सता रहे यार. उसका एक डॉल लेके फिर रहे हैं on the parade, and एम्बापे का एक Ninja Turtles का मास्क डाल रहे हैं. उसको But बरी इसमें भी लेना करे देना यार. होता है. उसको He'll get back at them. He's such a good player. He'll yeah, बरी भी करे उसको. Yeah, Like they put a thing in a bury. थोड़ा ज्यादा हो गया था. मेरे को भी like उतना वो नहीं दिखा, but But like जीत for के me, they can I get understand overexcited. like It's the okay. emotion, and someone wrote a very good comment on that thing when they put the bury. Said, yeah, you actually will try to bury someone who hits you 4 times on a goal. So, Yeah, that's the Mbappe, thing, right? yeah, Like, he should give it credit. वो रहता, like, and the thing is, for me, right now, Mbappe is the best player in the world, and I also feel like back of the mind, and we know that Messi is going to retire, and like we know that Mbappe is going to be the best player. So I think that the Argentinian fans have that moment right now, ki, like they can post about it, so they're doing that, but it's gonna come back to bite them. Yeah, that's how sledging works and like banter works. It's your day today, tomorrow it's somebody else's day, and Mbappe will have his say, bro. That guy's incredible. I never felt how I felt about him until that finals. The way I always knew he had the pace, he had the acceleration. You always talk about him, but he Kylian Mbappe, yeah, man, that guy is next level, bro. Even in 2018, bro, he won it in. I told everyone, like I was and then messaging he him, had 4 Pogba, minutes, 2 goals. he had Pogba, he had Kante, and he had a full team. Here he was alone, bro. He was alone. But bro, even in that 2 goals, पे उन्हें जो 2 goals जरूर मारे, 2 गोल जो मारा था उन्हें 4 मिनट्स में, उन्हें स्पेस से काट के मारा था वो. एंड एक और चीज आप जो बोल रहे हैं ना, जिरूड को निकालने, स्टफ लाइक दैट, उसमें भी people who don't know, maybe I can refresh your memories, that the whole France team had a virus before the match, just 2 days before the match. Virus, would they not, from 3 Idiots, virus, the virus, पेट का virus था उन लोगों को, उन लोगों के पेट में कुछ problems हो गए थे. So the entire, so Argentina, man, even despite those odds, France, man, really insane comeback. People saying Benzema को डालना था, Benzema नहीं कर सकते यार वो चीज. That's highly, that'll not be fair, and No, he doesn't have match fitness. they were unlucky, and it's Emi Martinez stood in the way. It's very simple. Is that Messi अपना काम करके खत्म हो गया था, फिर match Mbappe kept coming back. Whenever Messi gave an answer, this guy replied.
So But there was Messi's penalty, always, with all due respect, Messi's penalty was ice cold against Loris, reputed keeper, not very good at bro. penalties, but बहुत ठंडा लेके मारा है, But all those बहुत penalties रेड. were shit. Argentina के उन्हें लॉरिस नहीं मालूम क्या कर रहा था, पूरे shit थे, Yeah, Loris is पूरे not a crap penalty saver. penalties He's थे. a shot saver. He's not a penalty saver. Emilio Bro, Martinez is all of them everything. were poor penalties, and Martinez was saving very good shots. Like, यहाँ इधर उधर कूद ले रहा था. But everybody was Uh, hitting on the right of the keeper. Like he Bro, just even jumped if you one had place. like a Tim Krul or something like that, France would have won. It was Those were very poor penalties from Argentina. They were clearly way more nervous. France, you could tell that even though they didn't have their full team, they still had more experience in there. And Yeah, Lloris, yeah. Varane, Mbappe, these guys have won the World Cup. So I felt they had that more experience in there. And Argentina were panicking the whole game. They're the better team. Argentina, they had more of the ball, more of the possession, better chances, but they were panicking the whole game, and they भाई won आप because देख of लो, Emilio Martinez. अब पूरा मैच समराइज अगर अपन करें, स्टार्ट हुआ हाफ से पहले, हाफ के बाद बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ग्रीजमैन नहीं है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जिरूड नहीं है, निकाल दिए. कुंडे थोड़ा हचकिचा रहा था, कुंडे को रखे, डेम्बेले को भी निकाल दिया डेम्बेले भाई. को भी निकाल दिए, डेम्बेले को भी निकाल दिए. उसके बाद अपने कौन आया, कुनाटे आया और इन्हें तुराम आया. एंड उसके बाद क्या थी टीम, बट दे वर ऑलरेडी 2-0 डाउन. आए बच्चे जज्बात से खेले और भाई क्या खेले यार. वो एम्बापे का जो सेकंड गोल वॉली पे था यार, आई कांट फॉरगेट दैट मोमेंट. Yeah, and I credit was to like, Deschamps. He gets criticized a lot, but I feel he's a really good coach, man. And I 2 think they should मिनट्स try. में 2 गोल यार, 2 मिनट में 2 गोल कौन मारता है यार, कौन मारता है? I tell He you, did. Kylian I read Mbappe. a tweet where he did 18.5, 18.6 Virat Kohli of Yeah. in the World Cup final. That's what I read a tweet somewhere there, and it was like that, man. It was unbelievable. Great World Cup, fantastic. I think it's probably the best World Cup I've seen. A lot of drama, a lot of things. The final was the best World Cup final I've seen again. For me, the best before this was the Italy-France one in 2006 when the headbutt and there's so much drama, but this beat that, I think. It was really good thing. Well, yeah, that pretty much wraps it up, Mustafa. Anything else you want to discuss before we take the leave? No, I think tomorrow we have the test match, so we have quite a bit of content to cover. So we'll prepare for that. We have to do the test match, and then we have to do Sunrisers RCB, and then we'll try to do another episode where we will preview the auction, see the players available, who we think will go for who, and we'll discuss that. So join us tomorrow again, please. We'll try to do a couple of episodes, so we'll let you know the timings. Follow us on Twitter and Instagram, Chasing the Target. You can ask us questions over there. Thank you so much for your support. And Nitin bhai, yes, we will put the tags for the tomorrow's episodes. Faiz will do that without any further ado, for sure. And I'll also, if he doesn't, then I'll do it. I think that's it, man. From my end, I think it's gonna. Hopefully it's a fun test match. Hopefully we see a lot of wickets. We see the way you described it, I can't wait. I'm gonna get ready. Like पूरा नाश्ता वास्ता रेडी करके बैठने वाला हूँ. because रैंक टर्नर अगर रहा और 230 270 वाला मैच रहा तो मैं तो बहुत एंजॉय करने वाला हूँ. But yeah, मुस्तफा भाई बोले कल is going to be the day one at Mirpur, second test, and in our show we'll be discussing the review of the first day, and also simultaneously we'll be talking about Hyderabad and Bangalore and the auction and what are the unsold players. Hopefully we'll get to that as well. But till then, guys, have a good night, stay safe, and just keep watching, liking, and subscribing, Chasing the Target.